हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून। आ गए फाइनली। दो दो मॉनिटर के साथ बड़े बड़े यूट्यूबर आ गए हैं, जैसे कि माही कह रही है, बिग यूट्यूबर विद टू मॉनिटर स्पॉटेड। सॉरी। कौन कौन है भाई यहाँ पे? हैं जी, 10 लोग बैठे हैं। हाजिरी तो लगा दो, पता तो लगे कौन कौन है। हाय तो बोल दो। आगे चैट करने की जरूरत नहीं है, हाय तो बोल दो ताकि मुझे पता लगे कौन कौन है। हम अपने बड़े मॉनिटर पे बड़ी बड़ी चैट देख रहे हैं। छोटे से टैब के ऊपर ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा क्या कौन बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे सारी चैट नजर आएगी मुझे। हाँ चलो, इतने गेम स्टार्ट करते हैं। इतने लोग अपना अंगड़ाइयाँ लेके ज़रा हेलो बोलने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों से हेलो भी नहीं बोला जा रहा। बड़ी शर्म की बात है यार, बड़ी शर्म की बात है जी। ये है हमारा नया मॉनिटर। तुम्हें फ़र्क नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम्हें तो डेली की तरह नज़र आएगा। बट दिस इज़ माई न्यू मॉनिटर। लेट्स स्टार्ट द गेम। लेकिन यार क्या, वैसे बताऊँ, कलर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही मस्त। कुछ ज़्यादा ही मस्त कलर दिख रहे हैं। अब लग रहा है कि गेमिंग मॉनिटर पे 165 हर्ट्स के मॉनिटर पे गेम खेल के कैसा लगता है जी। हाँ। एक मिनट जरा यार, चैट पॉप आउट करने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चैट चली गई। ओह अच्छा, तभी लोग हाय बोल रहे हैं। मैं, अरे मेरी चैट अपडेट नहीं हो रही। वही मैं कहूँ, चैट अपडेट क्यों नहीं? रुक जाओ गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चैट अपडेट नहीं हो रही थी भाई, इसी वजह से तो कन्फ्यूजन हो रहा था हमको। अब चैट अपडेट होगी। वो मैंने ना रिफ्रेश कर दिया, तो मेरा चैट पॉपअप जो है ना, वो छुप गया दोबारा से। हाँ जी हाँ जी। तो सौम्य, अर्जुन, लेखराज, हाइपर, स्टार पैन, सुजीन, गगन, टीटीजी गेम्स। हेलो हेलो हेलो। नॉट मॉड। वो मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने गया था, अब आया हूँ वापस। क्या बात है जी, क्या बात है। डस्की इम्पैक्ट, और कैसे चल रहा है? स्ट्रीमिंग करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अरे नूब नहीं यार, मैंने रिफ्रेश मार दिया तो ना वो बंद हो जाता है। ऐसा होता है, प्रो प्रो लोगों के साथ ऐसा होता है। क्या बात कर रहे तुम? बाई गॉड, आसमान एक्चुअली में नीला नजर आ रहा है ये। पहले हल्का फुल्का नीला नजर आता था। भाई 27 को केमिस्ट्री का बोर्ड है, टिप्स दो। 27 को केमिस्ट्री का बोर्ड है, टिप्स दूं? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, याद करके जाना ये। कोन्नीचिवा लेखराज, कोन्नीचिवा। मैंने न्यू विलेट का स्टोरी चालू किया। तुम काफी पीछे चल रहे हो यार। उसके लिए मेरे को पहले आधा करना पड़ा लिनी का। बहुत पीछे चल रहे हो। और फिर वो वर्ल्ड क्वेस्ट भी। आज अकेले की समझ सकते हैं, तुम्हारा चल भी तो यार वो रहा है ना कि स्कूल वगैरह, ऑल ऑफ दैट। यू नो अरे मजा आ रहा है, बस थोड़ा मोनेटाइजेशन के लिए डबल टाइम कर रही हूँ। अरे यार, मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागो। तुम्हें बता रहा हूँ, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बहुत टट्टी है, समझो। वर्डल स्पेल भी पहले ही हो गया शायद। अरे हाँ यार, वर्डल स्पेल भी रह गया गाइस, वेट। हाउ कैन वी फॉरगेट द ट्रेडिशन? हाउ कैन वी फॉरगेट द ट्रेडिशन? हैं जी? हाउ कैन वी फॉरगेट द ट्रेडिशन? एक मिनट। वर्डल, चलो वर्डल से स्टार्ट करते हैं। 27 को केमिस्ट्री एग्जाम है और मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बस ये याद रखना, सब क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनिक और फिजिकल रात, मतलब रट लो। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले चालू किया था, फिर गेंशिन नहीं खेला। ओ 27 को केमिस्ट्री एग्जाम, ये तो पढ़ लिया मैंने। नया ट्रेडिशन आया है कि हाँ यार, मतलब कि हम थोड़ा वर्डल वगैरह खेलते हैं। येगर एसके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, वेलकम टू द चैनल। वेलकम वेलकम वेलकम। माइटोकॉन्ड्रिया बायो में आता है भाई, पर बायोलॉजी भी तो केमिस्ट्री से बनती है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ केमिस्ट्री, माय डियर फ्रेंड। Bro, try to speak English. India have very less Genshin audience, so other people from world can see your video. यार पता है क्या, मैंने सोचा कि ना इंडिया में स्ट्रीम करना तो इंडिया के लिए करें, बाहर के लोगों के लिए बहुत सारे ऑलरेडी हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे इंडियन गेंशिन वाले जो है ना, जो इंडियन है लेकिन इंग्लिश में स्ट्रीम करते हैं, उनका भी कुछ खास नहीं चल रहा, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपना यहाँ पर हो, देसी में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस किस चीज़ का प्राइस? ब्रीज किस चीज़ का प्राइस चाहिए? अच्छा प्राइस, सॉरी तुम वर्ड बता रहे हो, प्राइस। प्राइस टाइप करूँ? ओके लेट्स सी। प्राइस। क्या बात है, क्या बात है।
हैं जी? है भाई, पहला वर्ड सही ढूंढ लिया, बाकी के 4 सही ढूंढ लिए, क्या बात है। तुम प्रो हो इस गेम के अंदर हैं? क्या होना चाहिए? पी आई, पियर्स। ओके ओके, पाई है, पी आई है, उसके आगे ई आर गलत जगह पे है। आरबीएसई क्या है? वो सीबीएसई बोलना चाह रहा होगा। सीबीएसई दे रहा है। आरबीएसई कुछ नहीं होता, सीबीएसई होता है। पाइपर। ये तो हो ही जाएगा। गुड 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 गुड, नाउ ऑन टू द स्पेलिंग बी। तो आज है आर हमारा मेन लेटर है, बाकी ये सारे हैं। तो ये हो सकता है वर्ल्ड, वर्ड, सर कोट ऑफ द डे तो पढ़ो, कोट ऑफ द डे आए। इतना नहीं पढ़ता मैं इतना नहीं। वर्ल्ड, वर्ल्ड हो गया। रोड, रूल, डोर, लॉर्ड। अरे कोई कॉम्प्लेक्स सा बताओ यार, कोई लंबा सा बताओ। ये सब तो ठीक है। लॉर्ड आर्कॉन लॉर्ड हो गया, लॉर्ड हो गया। हम्म, लोर। अच्छा, लोर नहीं, कोई वर्ड नहीं होता। वॉरलॉर्ड, क्या बात है। रोड वर्क, यही पूरा हो गया। चलो कोई नहीं, ये पूरा हो गया। नाउ लेट्स जंप बैक टू द गेम। हो गया। गुड गुड गुड, शाबाश। सब लोग पढ़े लिखे, क्या कहते हैं, घर है। योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी फीस का खर्चा जब भरा जा रहा है, दैट इज गुड। ठीक है, लेट्स गो। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लैंटर्न राइट, क्योंकि लैंटर्न राइट के अंदर लिटरली एक दिन 12 घंटे रह गए हैं। ठीक है, तो मुझे ये पूरा करना है। वी बिलीव आर फियर डिस्ट्रॉयड बाय न्यू ब्रेवरी, इट इज नॉट। फियर इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली मेड स्मॉलर बाय द करेज वी फाइंड आफ्टर इट इज ऑलवेज देयर। क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली मैंने अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना मॉनिटर लगा रखा है, बिल्कुल 24 इंच की टैब बना के, जिसके नीचे मेरा ओबीएस चल रहा है, ऊपर मेरी चैट चल रही है। चैट ओबीएस में भी नज़र आ रही है वैसे तो, लेकिन ऊपर वाली चैट थोड़ी सी लंबी नज़र आ रही है। ओके, सीबीएसई हार्ड आता है पेपर, पर इंडिया में सीबीएसई तो चलता है, दूसरा कौन सा था, आईसीएसई। यार मैंने 12th 2007 में की थी। ठीक है, इट्स बिन कितने साल हो गए, 16 साल हो गए मुझे 12 12th क्लास किए हुए। ठीक है, 16 ईयर्स 12th किए हुए, तो मुझे याद नहीं अभी क्या चल रहा है देश में। देश की एजुकेशन सिस्टम कैसी चल रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है। It's Raiden. Welcome to the show. Welcome to the stream. Third time speaking. Hi, my name is Raiden. Nice to meet you. Is there a chance we can be friends? We are already friends. You are on my stream. दोस्ती हो चुकी है। AJ Amazing Gaming Bro, can you rate my build? It's a year now, so UID. अभी इतनी जल्दी मैं क्या कहते हैं अकाउंट रिव्यू स्टार्ट नहीं कर रहा। अभी पहले अपन ये करेंगे। आज स्ट्रीम लंबी होगी, टेंशन ना लो। आज मैं जल्दी कहीं नहीं जाने वाला। आज भले मुझे 5 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, शाम के 7 बजे तक बैठना पड़े, स्ट्रीम चलती रहेगी। ठीक है, नेट चलता रहेगा, कंप्यूटर चलता रहेगा, स्ट्रीम चलती रहेगी। ओके। अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड होते हैं भाई। अच्छा, वो तो मुझे पता है, पर मुझे लगा था कि सीबीएसई चलता होगा सब जगह। लेट्स गो। वैसे मैंने इस क्या कहते हैं क्वेस्ट स्टार्ट कर ही दी थी। मुझे लगा था मैं शियानयून की स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने लैंटर्न रेट स्टार्ट कर दिया था। सीबीएसई नेशनल है, आईसीएसई इंटरनेशनल एंड अब स्टेट बोर्ड्स बने हैं। क्या बात है। तो सबके एग्जाम दे देते हैं। 12th कर लो तीनों से। आरबीएसई बोर्ड दिया था मैंने। आई एम फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप पहले से ड्यूल मॉनिटर वाले हो या अभी पुराने मॉनिटर को नए वाले से मिला के बनाया है? अभी कल लेकर आया हूँ मॉनिटर नया में। तो मैंने MSI का 24 इंच का 165 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर लिया है। तो ये मॉनिटर जो है, और अपना पुराने वाले मॉनिटर को मैंने एक आर्म स्टैंड के ऊपर लगा के टिल्ट कर दिया। तो अब मेरे पास ड्यूल मॉनिटर है। अब मुझे अपना टैब लगाना नहीं पड़ेगा। पहले मैं अपना टैब नीचे यहाँ पे लगा के चलता था, उसमें अपनी स्ट्रीम देखता था और उसी पे चैट पढ़ता था। अब मेरा OBS खुला हुआ है और मेरी चैट ऊपर खुली हुई है। उसके अलावा भी हैं। अच्छा, ICICI IB वगैरह वगैरह। अच्छा, राइडन पे 32 ओवर 165 रखूँ या 39 ओवर 158? अभी यही बेस्ट आर्टिफैक्ट हैं, दोनों ही बेकार हैं भाई।
39/158 रखो। व्हाट्स योर स्ट्रीम शेड्यूल फॉर द वीक? देखो वीक का ये है कि कल मेरी स्ट्रीम होगी दिन में, पर कल मेरा शूट भी है, तो कल शूट पे मैं शाम को जाना है मुझे, तो स्ट्रीम फिनिश करके मैं शूट पे निकल जाऊंगा, एंड देन डे आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो माई शूट। उसके बाद अपन फ्री हैं, उसके बाद अपन रेगुलर पे आ गए, ना मेरे पास एडिटिंग का काम है ना मेरे पास कुछ और काम है। आई विल बी स्ट्रीमिंग एवरी मॉर्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10:30 to 11, और उसके बाद जब तक चलेगा चलेगा। हमें भी अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, अपने न्यू मॉनिटर खरीदा तो तुम्हें तो वही दिखेंगे जो जा रहे हैं, बट मुझे बहुत वाइब्रेंट नजर आ रहा है सब कुछ, मामला जो है ना ये। हाँ 160 हर्ट्स पे क्लॉक्ड होगा, ओवर क्लॉक कर लो, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 165 हर्ट्स पे है भाई ये। बड़े यूट्यूबर बन गए 2 मॉनिटर वाले, भाई बहुत फायदा हुआ है 2 मॉनिटर वाले से ना। एक तो मेरी टैब फ्री हो गई है, मुझे अपनी टैब चलानी नहीं पड़ती, तो मैं अपनी टैब अपनी मम्मी को दे देता हूँ, उनको कथा देखनी होती है, भजन सुनने होते हैं, तो अब मैं टैब उनको दे देता हूँ, दे दूंगा मतलब। आज ही पहला मेरा सेटअप है ये मॉनिटर, डबल मॉनिटर वाला, ठीक है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो अपने को जाना है लैंटर्न राइट में, नीचे कूदना है अपने को इन दोनों के पास। It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. भाई साहब, ब्रो 8 डिक्शनरी इन द ब्रेकफास्ट। ब्रो मून कार्वर की शक्ल दिखाना, मून कार्वर की शक्ल यार याद नहीं। मून कार्वर इस गेम में आया, मतलब इस उसमें है मून कार्वर, आई हैव नो आइडिया। बट कथा खत्म नहीं हो गया, कथा खत्म नहीं हो गया मतलब, कथा मतलब कि वो भागवत कथा चलती है ना, मम्मी वो देखती है। बता दो ये दोनों कौन है, बताओ ये दोनों कौन है भाई, जो भी हैं ये दोनों, ये अपना वो खाकर आए हैं आज, डिक्शनरी खाकर आए हैं। अबे ये दोनों एडेप्टस है क्या? ये तो मुझे लग रहा है कि वो हैं, क्या कहते हैं, मून कार्वर और माउंटेन शेपर, उनकी ह्यूमन फॉर्म है। नेक्रोमेंसर वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपके सामने ही मून कार्वर है, अच्छा वही ये दोनों एडेप्टस हैं। ओह दिस इज हाउ एम्पायर ऑफ साइलेंस इज रिटन, मे बी मोर मेलोड्रामेटिक। अच्छा जी, One bears no secrets before two adapters such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. Hojong. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jehu. जेहू। तो इनके पास विजन क्यों नहीं है? मून कार्वर सॉरी क्लाउड रिटेनर के पास विजन कैसे है? होयो ने एनपीसी बना दिया दोनों को वैसे भी वो एनपीसी थे यार। अभी भी लैंटर्न राइट नहीं किया, अभी तो स्टार्ट किया है, आज ही फिनिश करूंगा इसे मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a deaf guy. Preposterous! Utterly preposterous! Right. Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. इन्होंने बनियान में रखा है विजन जैसे हमारे आंटियां रखती है पैसे यहाँ पे। During the last lantern rite, लाइक दबा देना भाई, किसने लाइक नहीं किया हो तो। with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness?
One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer. Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles. पता है क्या, मुझे क्या लगता है इन दोनों का डिज़ाइन जो है ना, एक एनपीसी और एक प्लेबल कैरेक्टर के बीच में कहीं पर है. मतलब कि एक प्लेबल कैरेक्टर की तरह फैंसी नहीं है और एक एनपीसी की तरह बिल्कुल ब्लैंड भी नहीं है. और वो ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि इनको ये दिखाना था कि ये दोनों अडेप्टर्स हैं तो थोड़े से तो बेटर होंगे, लेकिन प्लेबल कभी नहीं होंगे. क्योंकि अगर इनको फैंसी क्लोथ दे देते ना, बिल्कुल बढ़िया सा डिज़ाइन, फैंसी एकदम, तो लोगों को लगता है यार ये तो प्लेबल होंगे, इनकी विजन क्या होगी. तो होएवर्स बेसिकली कंफर्म कर रहा है कि दीज टू आर अडेप्टर्स बट दे विल नेवर बी प्लेबल, क्योंकि इतना सिंपल डिज़ाइन तो होने से रहा किसी कैरेक्टर का. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon, sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. क्या लगता है तुम लोगों को, मैं सही बोल लिया? Paimon's still curious about something. It's just, Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? फुल अडेप्टर्स टीम बाय बाय. हाँ, नहीं मिलने वाली. एक मिल गया, से काम चलाओ. और मुझे लगता है कि ड्रैगन्स जो है ना, ड्रैगन सॉवरेंस भी मेरे ख्याल से शायद प्लेबल ना हो. न्यूविलेट दे दिया उन्होंने, कहा न्यूविलेट दे दिया ना, ठीक है, काम चलाओ इससे. इमेजिन जैसे न्यूविलेट वाटर पंप मारता है, ऐसे ही जो पायरो ड्रैगन हो वो मारे, मतलब बिल्कुल ही फ्लेम थ्रोअर. जोरो वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड नाइट, क्या हाल चाल. बस यार स्ट्रीम स्टार्ट कर दी हमने फिर से, रेगुलर स्ट्रीमर बन गए हैं, मिसिंग स्ट्रीमर नहीं रहेंगे. मतलब परसों रहूँगा बट यू नो, और मे बी द इवॉल्व लाइक पोकेमॉन. इवॉल्व लाइक पोकेमॉन कौन, अडेप्टर्स या ड्रैगन्स? शाबालांग के है पायरो ड्रैगन, नॉट कंफर्म्ड बट मे बी. It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. रेड हेयर वाला पायरो विजन एंड ग्रीन हेयर वाला डेंड्रो विजन वाला. लेकिन ये कुछ ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है. और क्या कहते हैं, इनकी विजन लटकी होती है. बाइजू बहुत बाद में जाके प्लेबल बनाता है, लेकिन बाइजू की विजन हमेशा लटकी हुई नजर आई थी. वी ऑलवेज न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू बी प्लेबल. बेदिप्तो वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. कंफर्म्ड है, चलो देखते हैं. नहीं हो तो अच्छी बात है. आई एम जस्ट सेइंग कि अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है. इनको तो एनपीसी बना दिया. यस. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. ऑलरेडी बोला नहीं है. शाबालंक के जो वो था डिस्क्रिप्शन था, उसके अंदर लिखा हुआ था वन ऑर्डेन्ड विद प्राइमल फायर. अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है. डू यू नो जेट? हाँ बिल्कुल भाई, कोई स्पॉइलर मत देना प्लीज. आई नो जेट. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid. Cloud Retainers in this case. मेरे एडन देख लो, फ्लेक्स करानी है अभी. क्या कहते हैं, अकाउंट रिव्यू जो है गाइज, अकाउंट रिव्यू विल स्टार्ट एट 40 लाइक्स. 40 लाइक कर दो, अकाउंट रिव्यू स्टार्ट होगा. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. जिनका विजन नहीं है और डिज़ाइन मॉडल लुक्स लाइक प्लेबल कैरेक्टर, दे आर ससीएस्ट. बट इनका डिज़ाइन मॉडल लग नहीं रहा ना कि प्लेबल होंगे ये. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. बाय द वे, चैनल मेंबर्स अपना अकाउंट कभी भी रिव्यू करा सकते हैं. तो अभी मुझे किसने पूछा था वो करने के लिए, क्या कहते हैं, राइडन रिव्यू करने के लिए किसने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा. अगर कोई इफ़ यूर चैनल मेंबर तो हाँ, एक आर्कॉन चिचा से किस तो मैं भी डिजर्व करता हूँ. आओ आओ दें तुमको पप्पी हम.
बैनर होने के बाद 4.5 आएगा, लाओ लीक कर दिया, किधर है? नॉट मॉड को क्या कहते हैं, बैन दिया जाए, नहीं दिया जाए, मजाक कर रहा हूँ, मत देना। अच्छा, न्यूविलेट को इंट्रोड्यूस किया है ड्रिप में और मार्केटिंग में, सो ऑफकोर्स प्लेबल तो कंफर्म्ड है। नहीं, ऐसे तो एलिस बहुत सारे कैरेक्टर्स को वो करती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब थोड़ी वो भी प्लेबल होगी। वेल अडेप्टाई कैन चेंज फॉर्म, सो मे बी दिस मॉडल इज जस्ट अ टेम्परेरी वन। नहीं, ये इनकी ह्यूमन फॉर्म है भाई। न्यूविलेट C1 या वेपन, यार न्यूविलेट C1 या वेपन, क्या कहते हो दोस्तों? जो न्यूविलेट वाले हैं क्या बोलेंगे? किरण वेलकम टू द स्ट्रीम। भाभी मारेंगे अगर किस दिया तो। आपके मॉड ने राइडन रिव्यू मांगा है, तो तुम्हें मॉड बनाया ना। आर यू माई क्या कहते हैं, मेंबर और नॉट? मैं तो कैन सेंड यूआईडी फॉर अकाउंट रिव्यू। या तो अभी अकाउंट रिव्यू स्टार्ट होगा, बाकी सब लोगों का 40 लाइक्स के ऊपर लाइक दबा दो, 40 कर दो, तब होगा। एंड मेंबर्स कैन गेट देयर अकाउंट रिव्यू एट एनी टाइम। One surmises that she has shut herself away, सिर्फ अपना refused अकाउंट। all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. सिर्फ अपना अकाउंट, यानी दोस्तों का अकाउंट रिव्यू करा रहे हैं। तुमने अकाउंट दिया, तुम्हारा नाम होना चाहिए अकाउंट के ऊपर। However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. एलिस भी होगी प्लेबल, ये तो स्पेकुलेशन है। Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy lantern ride. Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along. फूरिना के अलावा क्या ही करूं। हाँ, यही बात है। टीम डायमंड वेलकम टू द स्ट्रीम। वेलकम वेलकम वेलकम। Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Let's I'd go. like to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. यार ये कितना लंबा है वैसे? इसकी जो क्वेस्ट है हमारी लैंटर्न राइट की, कितनी लंबी है? अरे इतना बड़ा पर्पल क्रिस्टल शो के लिए है भाई। अरे हाँ यार, तुम्हारे नाम के आगे लगा तो है पर्पल क्रिस्टल। हाँ बताओ बताओ, नेक्रोमेंसर टेल मी, अपनी आईडी दो, मैं करता हूँ। लंबी तो है, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे तो फिर भी ठीक है, तब तक तो आएगा ही आगे। वैसे अकॉर्डिंग टू माइन लोर शाबलांके का ट्विन भी है हनाफू। हाँ 2 आवर्स, ओके। मिड है, क्वेस्ट मिड है। लाओ नेक्रोमेंसर अपनी वो दो, आईडी दो। नेक्रोमेंसर ने अपनी आईडी दे दी है। लेट मी चेक, एंका पे देखेंगे। चेक क्या करना था? राइडन ना, ओके। कैच के साथ R2 कैच। भाई फार्म करो, मछली वछली पकड़ो भाई। R2 कैच क्या होती है? क्रिट डैमेज कम है तुम्हारा, एनर्जी रिचार्ज 250 से नीचे है, इलेक्ट्रो डैमेज बोनस फिर भी ठीक है। क्रिट डैमेज तुम्हारा कम इसलिए क्योंकि तुम्हारे सर्कलेट में और तुम्हारे गॉबलेट के अंदर क्रिट डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हें क्रिट डैमेज ढूंढना पड़ेगा। और तुम्हारा जो ये सर्कलेट है ये बहुत ही बकवास है, इससे ज़्यादा बकवास सर्कलेट मैंने जीवन में नहीं देखा। क्रिट रेट सर्कलेट है और सारे के सारे सबस्टैट फ्लैट वाले हैं, सारे फ्लैट, कोई भी परसेंटेज वाला नहीं है। इसमें डिफेंस परसेंटेज होता ना तो फिर भी ये थोड़ा सा बेटर कह सकता था मैं, थोड़ा सा बेटर, मतलब 0.1% बेटर कह सकता था। सारे फ्लैट सेट है, +16 +21 प्लस, ना 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 ना, बेटर करो अपने राइडन को। यानसन कुड बी बेनेट सिबलिंग। यानसन हाँ कुड बी, क्योंकि उनके फीचर बड़े मिलते जुलते हैं। सुपर हीरोज एनीमे अभी अकाउंट रिव्यू नहीं हो रहा, ये अकाउंट रिव्यू सिर्फ मेंबर्स का है। बाकी सब लोगों का अकाउंट रिव्यू स्टार्ट होगा 40 लाइक्स के ऊपर। तो 15 लाइक हो चुके हैं, 40 लाइक्स तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद हम अकाउंट रिव्यू स्टार्ट करेंगे। बाकी सब लोगों का मेंबर्स अपना अकाउंट कभी भी रिव्यू करा सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द गेम। एडवाइस देंगे देंगे बिल्कुल देंगे। सुपर हीरो एनीमे गंदी राइडन। अच्छा ये बताओ आजकल यार कुछ लोग एनीमे कौन कौन सा देख रहे हो? मैंने कल एडिटिंग करते करते ऑलमोस्ट आज मेरा असैसिनेशन क्लासरूम का सीजन 2 एंड हो जाएगा। मैं सोलो लेवलिंग के अगले एपिसोड का वेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलो लेवलिंग का जो अगला एपिसोड आने वाला है ना, वो एक तरीके से रिकैप एपिसोड होगा, उसमें कुछ नया नहीं होगा। और उसके बाद वाला एपिसोड फाइनल होगा, फिनाले होगा। और उसके अलावा मैं देखूंगा स्पाई फैमिली का सीजन 2 फिनिश करना है मुझे। या तो ब्रो मेंबरशिप ले लो और यस, नो एनीमे ऑफ लेट।
देखो यार, एनीमे काहे नहीं देख रहे? Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? क्लासरूम ऑफ एलीट देखा है भाई? अभी नहीं देखा मैंने, पता है इस टाइम मेरे 2 वॉच के अंदर कम से कम 15-20 एनिमेज हैं जो मतलब कि मैंने डाले हुए कि देखने हैं मुझे अभी। प्रेरान भी है उसके अंदर, प्रेरान है उसके अंदर। अच्छा, एनिमे पसंद ही नहीं है, चलो ये भी सही है। Assistant can't swallow! And a butterfly! And... Ah, this jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. अपोथेकेरी डायरीज भी मैंने वो कर रखा है, मतलब कि लिस्ट के अंदर एडिड है, देखना है मुझे। सोलो लेवलिंग, होकाइडो गर्ल्स, ब्लीच। यार पता है क्या, ब्लीच, नारुतो, लंबे वाले जितने भी हैं ना, मैं शुरू ही नहीं कर रहा उनको, पता नहीं क्यों क्या, मतलब आई नो वाई, क्योंकि दे आर टू डैम लॉन्ग। पूरे दिन देखूंगा ना तब जाके फिनिश उनके सीजन। ब्लीच हो गया, नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, मैं इसलिए देखना शुरू ही नहीं करना चाहता इनको, है ना। मेरा एक बड़ा फेवरेट एनिमी हुआ करता था जब मैं यंग था, इनुयाशा ही बहुत लंबा है, इसलिए मैं दोबारा देखना चाह रहा था, पर मैंने इसलिए स्टार्ट ही नहीं किया इनुयाशा को। किसी ने नहीं देखा तो इनुयाशा देखना, इट्स वेरी गुड। लास्ट टाइम सुपर कप देखी, अच्छी एनिमे थी 6 महीने पहले। ओके, एनिमे की वजह से गेंशिन डाला था। मैंने तो सोलो लेवलिंग की मांगा पढ़ ली, पूरी 150 चैप्टर पर हूँ, एनिमे का इंतज़ार नहीं होगा। यार पता है सोलो लेवलिंग, हाँ ठीक है अगर तुमने पढ़ ही लिया तो। और बाकी मेरा इस टाइम अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन भी चल रहा है, कोई स्पॉइलर नहीं देगा, मैं भगवान कैसे बैन कर दूंगा। जो भी तुम देख रहे हो उसको देखो, एंजॉय इट, डू नॉट गिव स्पॉयलर्स किसी भी चीज़ को लेके। रीसेंट एपिसोड ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट वाज ऑसम। ओके, चेन्ड सोल्जर देख लो। ओके, मैं तो एक एपिसोड खाते समय देखकर ब्लीच और नारुतो खत्म कर दिया 2 साल में। 2 साल में सोचो। फ्रेरान बियॉन्ड द जर्नी विल बी सो गुड। ओके, फ्रेरान के बारे में मैंने बहुत सुना है, देखूंगा। Oh, now that's Paimon's kind of kite. सोलो लेवलिंग का 7 एपिसोड आ गया है, तो मेरे ख्याल से वो एपिसोड स्टोरी की कंटिन्यूएशन है या रिकैप है। मुझे लगता है कि रिकैप है वो, उसमें कुछ नया नहीं है। अब तक जो भी सोलो लेवलिंग में हुआ है इस सीजन, बस वही दिखाया होगा। I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite making materials. रिकैप है ना? Wonderful. हाँ, I'll pack them up या in तो कह my रहे box and continuation है। goods to Yilong Wharf for you. पर देखूंगा तो मैं तब भी। Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. चेन सोल्जर फैमिली के सामने मत देखना, फैमिली के सामने तो मैं कुछ नहीं देखता। रिकैप मतलब कि जो लेटेस्ट एपिसोड है सोलो लेवलिंग का, उसमें जो भी पीछे के एपिसोड आए हैं सारे, उनको रिकैप करके बताया कि अब तक क्या क्या हुआ। जैसे हिंदी में दिखाते ना, अब तक आपने देखा। Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? वन देखने वाले कहते हैं कि 500 एपिसोड के बाद मज़ा आएगा, तो क्या 500 एपिसोड देखूं बस अच्छा लगने के लिए? वैसे तुम चाहो ना तो तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि इन सब के अंदर ना फिलर्स बहुत होते हैं, तो यू कैन सर्च कि मुझे नारुतो देखना है विदाउट फिलर्स, तो तुम्हें वो बता देगा कि तुम इतने एपिसोड से इतने एपिसोड देखो। बेसिकली वो तुम्हें ये बता देगा कि कौन कौन से एपिसोड स्किप कर सकते हो, जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, बस फिलर्स हैं। मेरे एक दोस्त है, वन पीस 20 दिन में ख़त्म कर दिया। भाई पूरे दिन बैठ के देखोगे तो 20 दिन में ख़त्म कर दोगे, इट्स नॉट लॉन्ग। 20-20 मिनट का एक एपिसोड होता है, ठीक है। सुबह 8 बजे उठो, रात के 12 बजे तक देखो, डेली ये रिपीट करो, तो ऑब्वियसली ख़त्म कर ही दोगे। Is Gaming the guard you just mentioned? 2 पीस रुपीस बॉन्डर अच्छा रहता है, 4 पीस? 4 पीस में अगर तुम्हें मिल जाए बढ़िया से सारे स्टैट तो सही है, नहीं तो 2 पीस लगा दो। वेलकम थानोस, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं तो नहीं देखता फिलर्स। हाँ तो वही कह रहा हूँ, अगर जैसे मुझे अगर नारुतो देखना होगा तो ऑब्वियसली मैं फिलर्स तो नहीं देखने वाला। हालांकि कहते हैं कि फुल एक्सपीरियंस नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो रह जाता है थोड़ा सा, बट दैट्स ओके, दैट्स द सेक्रीफाइस। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास इस टाइम एनिमे कौन कौन से मेरे उसके अंदर है। वेट, आई विल शो यू कि मेरे पास कौन कौन से एनिमेज अभी वॉच लिस्ट के अंदर है। बाय द वे, अगर किसी को एनिमे देखना हो तो यहाँ देख सकते हो, anywatchtv.to, यहाँ पे सारे एनिमे मिल जाते हैं जो देखने हो सारे के सारे, ठीक है। तो अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जाऊँ, मेरी वॉच लिस्ट में से ये है जिनतामा,
गिंगा एयू दानेत्सु, वायलेट एवरगार्डन, डेथ परेड, ठीक है, कोनोसुबा एक्सप्लोजन, हाइक्यू, कोड गियस, स्टाइन्स गेट, बाकानो, और ये है ओकामी कोदोमो, साइकोपास, कोइनो काताची, किमिनो सुइजाओ, विनलैंड सागा, सोसुनो फ्रेरान, मॉब साइको, ब्लैक क्लोवर, प्लूटो, वन पंच मैन तो मैं देख चुका हूँ वैसे, टोक्यो रिवेंजर्स, हीरो एकेडेमिया, ओशिनोको, टोक्यो गूल, फुल मेटल अल्केमिस्ट, डॉक्टर स्टोन, हंटर हंटर, स्पाई फैमिली, जिगोकू राकू, और ये है अपोथेकेरी डायरीज हो गया, और तेंगोकू दाइमेक्यो, हेल्सिंग, स्किप टू लोफर, और ये है द एमिनेंस ऑफ द शैडोज, ट्राइगन एम्पायर, ट्राइगन स्टैम्पीड, किमिनो कोतोगा, ज़ॉम 100, जुजुत्सु काइज़न। ये सारे इस टाइम मेरी वॉच लिस्ट में जो मुझे देखने हैं अभी। समझ रहे हो कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। वन पीस में बहुत स्लो स्टोरी डेवलपमेंट होती है, इसलिए ड्रॉप कर दिया 100 एपिसोड पे। टू बी ऑनेस्ट, फिलर स्किप कर भी दो तो भी नहीं लगता है कुछ मिस करा है, बिकॉज इट डजंट गिव एनीथिंग टू द स्टोरी। उन्हीं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिलर्स। तुम्हें क्या लगता है फिलर क्यों बोलते हैं उनको? आई कैन से मैंने सारी देख ली जितने आप पे प्लेलिस्ट में हैं। वाओ, कंग्रेचुलेशंस भाई। डैम ट्राइगन, हाँ ट्राइगन का वो है, रीमेक है ये, और लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा है, पुराने वाले ट्राइगन का रीमेक है। टू पीस अटैक एंड टू पीस मेरिश हाउस हंटर सुजीन, कोनोसुबा S1 देख लिया क्या? अभी कुछ ये सब 2 वॉच में है, अभी देखा कुछ नहीं इनमें से। काश हम पे आप जैसा प्रेशर होता। प्रेशर ही होता बेटा, देख कुछ नहीं पाते। हो गया शायद लेंटन राइट, नहीं चल रहा भाई। Yes, the communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. लाइक कर देना गाइस किसी ने नहीं किया हो तो। ट्राइगन अच्छा एनीमे है। The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. वन पीस अगर मैं देखूंगा तो जब रीमेक आएगा तब देखूंगा, बिकॉज़ ओरिजिनल एनिमे की पेसिंग इज जस्ट हॉरिबल। If you were willing to help out, then I ये could तुमने put a क्लासिक head देखा है? start on my next appointment. उसका रीमेक है ये वाला ट्राइगन स्टैम्पीड, लेकिन काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, मतलब एक बहुत बहुत अच्छा रीमेक है। आप भी जल्दी जल्दी कर लो, लंबा है लेंटन राइट। हाँ बस कर रहा हूँ मैं। Really pressed for time. Oh, wonderful. You will, of course, be compensated for your efforts. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wusho dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. ब्लीच 45% फिलर है और मैंने सारे एपिसोड देखे हैं, इसलिए मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि फिलर्स कौन कौन से एपिसोड स्किप कर सकते हो आप देखने के लिए, फिर वैसे देखूंगा मैं। ओम, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम वेलकम। किधर जाने का है? Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. राइस, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैंने सोल लेवलिंग का मांगा 190 प्लस 10 स्पेशल टोटल पूरी मांगा पढ़ ली। यार काश भगवान मैं फिर से 18 साल का हो जाऊँ, मैं भी ये सारे काम कर, क्योंकि उस टाइम पूरे दिन मैं यही किया करता था। कार्टून देख रहे हैं, एनीमे देख रहे हैं, मांगा तो खैर उस टाइम पता ही नहीं था मुझे मांगा होती क्या है जब मैं 18 का था। ब्रो आई गॉट शाओ, सौम्या, कंग्रेचुलेशंस। ब्लीच में फिलर्स कम है और फिलर्स अच्छे भी हैं इसके। तुम्हारा आरनारा चल रहा है? अरे बाप रे। कोनोसुबा एक्सप्लोजन फिलर है, सीजन 1 ही देखना। ओके। लंच में क्या है? यार आलू के पराठे बने हुए हैं। Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. शाओ विदाउट शियानियन इज मोबाइल विदाउट सिम कार्ड। चावल खाते हो? बिल्कुल खाते हैं भाई चावल। बाकी सब खत्म हो गया इसलिए अब आरनारा कर रहा हूँ। करो करो करो। Upcoming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Elon Wharf. Oh, that must have been Longjo. Looks like I've got work. Gotta go. जो भी नए नए बंदे आ रहे हैं सब लाइक दबा दो भाई। Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. न्यूवी फुरीना काजुआ निकालना है इसलिए प्रीमो ही प्रीमो।
शाओ इज शियान्युन सन। हाँ ये पढ़ी है थ्योरी मैंने। और थ्योरी क्या है, मतलब मुझे स्ट्रीम पे किसी ने बोला था कि मिस्टर जोंगली और मिस्टर मिसेस शियान्युन का गामिंग इज ओपी। मेरे पास एक भी नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल गामिंग। Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. बहुत प्रीमोज मिल रहा है आरनारा में। हाँ हाँ भाई, क्वेस्ट ही बहुत लंबी है। प्रीमोज क्या, तुम्हारी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाओगे आरनारा फिनिश करते करते। Anywave.to में चले जाना, वहाँ पर लॉन्ग एनिमे के फिलर्स को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट होते हैं। अच्छा ऐसा। Kite-making materials. I see, I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. ये कैसे जानता है इसे? Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. अच्छा हाँ, इनको Thanks for कौन your नहीं help. जानता। गामिंग नहीं गेमिंग, सही बात है, गेमिंग। नॉटी हाँ जल्दी हो जाए, इजी पीजी। Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. ऑब्वियसली। Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. एनीवॉच भी हाईलाइट करता है फिलर्स? ये नहीं पता था मैंने कभी। एनीवॉच पे इतना लंबा कोई एनीमे देखा नहीं जिसके बहुत सारे एपिसोड्स हों। गेमिंग नो एनीमे है, एनीवेव है, बस डिफरेंट नेम। ओके, मेरी एक्सप्लोरेशन ट्रीज क्वेस्ट सब 100% है, ओनली 1 ईयर में, मतलब पूरे तेवात की, मतलब सारे मैप की। अरे गामिंग नहीं गामिंग, गेमिंग नहीं गेमिंग, पता नहीं क्या बोल रहे हो। He's a good guy. He's just been super busy lately. गेमिंग के आइडल एनिमेशन में RGB लाइट्स हैं। Don't be too hard on him, yeah? अब इन्होंने बंदे का नाम ही गेमिंग रख दिया। अगर गामिंग रखना था तो GA के आगे हाइफन लगाते और M को कैपिटल रखते। दे होयो चाहता है कि हम इसे गेमिंग पढ़ें। So, you here for Lantern Rite? सर होंका स्टार पटरी में आया है डबल प्लानर इवेंट। यार होंका स्टार को तो पूछो ही मत, आंखों में आंसू आ जाते सोचते ही मेरे। Yep, it's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Elong Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. पूरा तेवात छान डाला मैंने। ओम पूछ रहा है नेटलैंड क्या है बाय द वे। नेक्स्ट नेशन भाई। The ingredients आर्ले are किनो की ट्रिप fresh, आने वाली the है। portions are Yes. generous, and the prices won't break the bank. गामिंग। Order anything? Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard after all. वाह, ये तू प्रोटेक्ट करेगा मेरे को? बहुत बढ़िया बेटा। पिनाकिनी क्वेस्ट करने का कब ख्याल है? जब मेरे बाकी के सारे खत्म हो जाएंगे तभी करूँगा पिनाकिनी क्वेस्ट में। ओके ओके कूल। गो टू क्वेस्ट। हाँ नहीं ये नहीं यार, मेरे को वो करनी है, मेन क्वेस्ट करनी है। मेन क्वेस्ट से पहले ये करना पड़ेगा क्या? ये है ना मेन क्वेस्ट। आओ मिस्टर एरिना, मिस्टर पॉम, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके किधर जाने का? Ooh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. आए, Wait. ये कहाँ से आ गया? I'll handle this. Things are about to get dicey. Really? Gotcha.
मुझे गेमिंग से खेलना नहीं आता, मैं मतलब फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे आता है इससे खेलना। पाकिज़ो हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। Seems like we really can't go anywhere without running मैंने इतने into क्वेस्ट the किए Warden's camp. कि अब आरनारा छोटा लग रहा है। अभी करो बेटा, अभी तो शुरू हुआ तुम्हारा आरनारा। एनिमे श्यूग एनिक सिमिलर ऑल्टरनेट वेबसाइट्स। ओके, मैं एनी वॉच पे देखता हूँ, बहुत टाइम से एनी वॉच पे देख रहा था। बीच में मैंने 2 महीने के लिए क्रंची रोल की वो ली थी सब्सक्रिप्शन, मुझे लगा 100 रुपये महीने की सब्सक्रिप्शन है। यूडीएम वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा प्लंज डीपीएस है, ओके। तो बेसिकली मैंने क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन ली थी और हुआ फिर मैंने क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन बंद क्यों की? 100 रुपये महीना मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं? मैंने क्यों बंद की क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन? क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पाई फैमिली लगाया और स्पाई फैमिली सिर्फ तेलुगु में अवेलेबल है क्रंची रोल इंडिया पे, ना इंग्लिश ना जापानीज, कुछ नहीं, सिर्फ तेलुगु में चल रहा है। बताओ। हेलो आशीष, वेलकम टू द स्ट्रीम। जब 76 आरनारा को धो दोगे तब पता चलेगा। मेरे आज तक नहीं हुए भाई आरनारा क्वेस्ट, मेरी आज तक आरनारा क्वेस्ट नहीं हुई। तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम क्या बता रहा था? क्रंची रोल भाई, मैंने स्पाई फैमिली का सीजन 2 लगाया तेलुगु में। अब कौन देखेगा तेलुगु के अंदर यार? काजुमा हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैन आई आस्क गेम क्वेश्चंस? यस यू कैन। Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your jab. मैंने तो गामिंग से 33 के डैमेज दिया था वेब से, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। आरएनआर नहीं किया, अब सारे नहीं हुए, मेरे पेंडिंग है। पैल वर्ल्ड का सर्वर लॉगिन नहीं हो रहा भाई। आए, उड़ गया सर्वर। भाई हार्ट अटैक मत दो मुझे। मजाक मत करो, अपना सर्वर उड़ गया मतलब पूरी गेम दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। यार पता है, मैं ना खेलना ही नहीं चाह रहा था। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में यही था, मैं खेलना ही नहीं चाह रहा था। कल डैगर का कैसे मैंने कल लॉगिन किया उस सर्वर के अंदर यार, मैं लॉगिन करके अपनी सारी बेस चेक की हैं, उसके बाद जाकर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। हद है यार, बताओ, सर्वर ही उड़ गया। कल कितने बजे उड़ा? क्योंकि मैंने लॉगिन किया सर्वर के अंदर। Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. मेरा गेमिंग 232 के मैक्स हिट एंड स्पाइरल अबिस, मियन स्कारा बॉस पर 490 गेट। ओके, कोई नहीं, फिर से खेल लेना भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, फिर से खेल लेना। मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब ऑब्वियसली सबने मेहनत की है। अर्ली एक्सेस में था क्या यार? गेम अर्ली एक्सेस में उसमें दिक्कत नहीं है, पता है मेरे दिमाग में बात स्टार्टिंग से थी कि मैं खेल तो रहा हूँ सर्वर के अंदर, लेकिन ना ये चीज़ ना चल नहीं पाएगी ज़्यादा लंबे टाइम तक। मुझे लग रहा था कि ज़रा सी भी दिक्कत हुई ना तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो कल ठीक हुआ था तो थोड़ी देर के लिए। तो भी बताओ कि हमारी जो सेव फाइल्स हैं उनको मैं सिंगल प्लेयर में लेके जा सकता हूँ कि नहीं लेके जा सकता, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। Have you ever heard of wushu dancing? Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue पता नहीं यार कैसे सर्वर उड़ गया, मेरा तो मूड ही खराब हो गया सारा। chance to watch wushu dancing. So it's not something I do full time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? यार फाइल करप्ट हुई है, इसका मतलब क्या? मतलब सर्वर तो बाहर पे था, सर्वर तो कहीं और है ना, तो वहां से कैसे उड़ गया? अरे यार हमारे पैल वर्ल्ड का सर्वर था। It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday I stayed up all night playing cards. Oh.
लॉगिन नहीं हो रहा सुबह से। Let's go. The docks are just up ahead. बंदे बॉसेस ब्रीड कर रहे थे साथ में, इसलिए ये हुआ है यार। यही तो पंगा होता है। मैंने अब खेलना नहीं है, अब चाहे सर्वर कोई भी बनाए, कोई बनाए ना बनाए, मैं अब अपने पर्सनल सिंगल प्लेयर में खेलूंगा यार। सब दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। I'll have to start everything from the scratch. पर चलो कम से कम knowing what I know now मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी दोबारा स्टार्ट करने में। मतलब यार पता लेवल Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you अपना were the सर्वर ones who बनाओ said you were travel experts. यार। अपना सर्वर बनता नहीं है, आपको सर्वर ना परचेस करना पड़ता है, Too hilly. Floating up and down ये so चक्कर है। much. Where's Paimon मतलब कि now? मैं अपने सिंगल प्लेयर गेम को मल्टीप्लेयर बना सकता हूँ, लोग मेरा वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं जैसे गेंशिन में करते हैं, Stomach's empty again. लेकिन Aw. पंगा है Would यार। you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. आजकल गेम्स का ये अनडिफाइंड गेम्स लॉन्च करेंगे तो अपडेट से फिक्स कर देंगे। पर यार अपडेट तुम्हारी उड़ गई You ना। might wanna pace yourself there, or you'll be too full to eat a हाँ ये proper समझ meal लो, later. AR60 से सीधा AR1 पे आ गया मैं। Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. व्हाट अबाउट बैकअप डेटा? यार हमारे पास लोकल सेव फाइल्स तो होती है हमारे पीसी के अंदर, That close of a call, बट huh? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन सेव फाइल्स को मैं सिंगल प्लेयर के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ कि नहीं कर You can buy सकता? them from all sorts of places. ये मुझे गूगल करना Whether it's पड़ेगा। a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If फिर you like देखना these पड़ेगा। ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. करके देखना पड़ेगा। Okay, Paimon is kind of enjoying listening to your chitter chat. नहीं, सेव फाइल तो होगा, लेकिन अगर सर्वर में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ Paimon is कि happy उन to फाइल्स को हम be on, सिंगल प्लेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि मैं अपनी सिंगल प्लेयर गेम अगर खोलूँ Could be in a good तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ना हो, once. ये मैं कह रहा हूँ। Need some fresh bamboo for this. आ गए जी यीलोंग वार्फ। Woohoo! We're here! Don't forget your things and watch your step as you get off the raft, or you're in for. दुष्यंत वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या पूछ रहे हो? क्या इस गेम में कॉम्पी होता है क्या? कॉम्पी मतलब कि चेक करो क्या? Thanks for the ride, Uncle Bosu. नहीं मैं करूंगा चेक, मैं करूंगा। अब तो मैं ये खेल रहा हूँ, बाद में See you चेक some other करूंगा मैं। time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट? यार ये ई स्पोर्ट्स वाली गेम नहीं है। ये गेम ई स्पोर्ट्स वाली नहीं है। कहाँ जाना है? ऊपर? Check that tea. अबे लिफ्ट आ रही है क्या? ओह सर्वर होस्ट पे होंगे फाइल्स वर्ल्ड के। नहीं मुझे पता है फाइल्स कहाँ पर है, सेव फाइल्स मेरे पीसी में कहाँ पर है वो मुझे पता है। पीसी में भी तो सेव फाइल्स होते हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सेव फाइल जो हैं सिंगल वर्ल्ड में ट्रांसफर होंगे कि नहीं। आर्क के बारे में बोल रहा है ये। अच्छा आर्क मेरे पास है, आर्क गेम भी है मेरे पास, पर मैंने अब तक खेली नहीं, मतलब खरीद के रखी हुई है मैंने। कंपेटिटिव टाइप का है नहीं शायद, वो पूछ रहा है। नहीं कंपेटिटिव टाइप का नहीं है भाई ये।
क्या बात कर रहे हो? दिस इज नॉट competitive at all. Hey! Hey, slow down. I'm begging ya. What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? पैल वर्ल्ड सर्वाइवल है. Well, हाँ. how should I put it? Come on, spit it out! Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. Imagine if Genshin had e-sports, what it would be. देखो e-sports की ना कंडीशन होती है कि जब भी कोई गेम ऐसे ही e-sports नहीं बन जाती. ठीक है, कुछ गेम्स होती हैं जो बाय एक्सीडेंट e-sports बन गई, लेकिन कुछ गेम होती है विच आर डिजाइन टू बी e-sports. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. बस 45 मिनट की क्वेस्ट बची है. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. ये कैसा मिशन है बे? ये कैसा एस्कॉर्ट मिशन है? अबे तू उसके बिल्कुल पीछे जाएगा क्या? Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. एक बार इसमें छुपने की जगह किसी फैमिली वाले से मिलना. मिलूं जाके? Genshin esports बन गई तो C6R5 वाले लोग आएंगे. Stick close, traveler. Uh-oh, we've been stuck. अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मिल गए हैं When did you get here? Oh, you तो हम दोबारा से स्टार्ट कर सके. wait. Oh. How long are you planning on staying this time? ब्रो, हाउ टू स्टार्ट अ YT चैनल रिलेटेड टू गेंशिन इम्पैक्ट और ओपन वर्ल्ड गेम. बस खेलना स्टार्ट करो, चैनल बनाओ एंड स्टार्ट प्लेइंग. इसमें इतना सोचना क्या है? How's work been? गेम It स्टार्ट sounds करो. tough. You should visit home more often. The last time I spoke with your dad, he couldn't stop talking about you. He seems worried. Causing trouble again, are you? Well, फंसा दे बेचारे को. मैं तो चुपके चुपके निकल गया था. मैं भी वही निकलने वाला था भाई. मैं भी निकलने वाला था. ये तो किसने बोला कि मिल के देखो, तो मैं आ गया. That was terrible. sorry. They mean well. It's just... I don't want to talk about it. Let's get these things delivered first. It's okay. Whenever you're ready to talk about it, we'll लाइक be दबा ready. देना भाई, किसी ने नहीं किया हो तो. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. मैं ही सोचा क्या होता अगर मिलते तो करा तो ये फाउंड इट. अच्छा. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes. Thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. कितना डेटा लगेगा इस गेम को डाउनलोड करने में? यार अभी तो देखो ये गेम मेरे पीसी में ऑलमोस्ट 90 GB के राउंड है. गेंशिन पीसी के अंदर मेरे पीसी में इस टाइम जो उसका फोल्डर बना हुआ 90 GB का, 90 GB.
मोबाइल के अंदर 28 GB का होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा फ़ोन के अंदर भी और इसमें भी। You noticed what Paimon likes? How long have you two known Gaming? Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Ylang Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. 90 प्लस है, नहीं मेरे 90 है। A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. आओ मिस्टर सैवेज, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल? जबरदस्त क्वेस्ट, ऐसी आर्कन क्वेस्ट रोज देनी चाहिए। कहाँ, कौन सी आर्कन क्वेस्ट? ये वाली? That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad. थैंक गॉड कल ही 512 GB Ask anyone else. रोम वाला फ़ोन लिया हूँ। तो खेलो फिर। अगर तुम फ़ोन से स्ट्रीम कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हारे पास लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप वगैरह, OBS चलाने के लिए जो आप खेल रहे हो? हाँ, ये वाली, ये आर्कन क्वेस्ट थोड़ी है, लैंटर्न राइट है। Uncle Yongzan says मैं he बहुत doesn't बढ़िया have यार, enough सैवेज fare for this रियली रियली delivery. वेल। So what do you think, Uncle Jergway? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite making materials though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. All right then. Deliver it if you want to. मैं शायद आईफोन ले लूंगा। एंड्रॉइड हैज बिट्रेड मी मल्टीपल टाइम्स। जैसे फुल F2P हो गया? नहीं नहीं। Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. बोल भी किस तरह पे करने के लिए? तेवाद के सबसे बड़ी कंजूस से। Whoa, that's way too generous of you. लेकिन मेरे मोबाइल पे तो सिर्फ 24 GB LA है। LA मतलब आई एम गोइंग फॉर डाउनलोड। कोई 5-6 ओपन वर्ल्ड गेम बता दो। नेम आई हैव अ लैपटॉप दो। लैपटॉप मतलब गेमिंग लैपटॉप है? कैसा लैपटॉप है? Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. All right, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? Connectivity problem, majorly Android shits in the pan. Beat Exynos or Snapdragon and the phone just gets slower and doesn't feel permanent. ठीक है, तुम्हारी फीलिंग के ऊपर है। तुम्हें आईफोन लग रहा है बढ़िया तो आईफोन ले लो यार। He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? क्या इसको फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं? खेल सकते हो, बट इतना कोई फ्रेंड के साथ खेले कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। वर्ल्ड बॉसेस मारने हैं तो फ्रेंड के साथ मिलकर कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी मम्मी का फ़ोन 7 साल से चल रहा है, बट सबका अपना अपना है। हाँ वही, मेरे पोको X3 6000 mAh की बैटरी है, पूरे दिन Genshin खेलता हूँ। मेरे पास ये है Xiaomi का क्या कहते हैं 11T Pro 12 GB रैम वाला, 256 GB इंटरनल है और इसमें स्नैपड्रैगन का Gen 8 प्रोसेसर है। Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have winter melon cake instead. ओके टीम, जाओ एनीमे देखो।
बहुत अच्छा कोऑप है ब्रो, साथ में स्विमिंग एंड फ्लाइंग भी कर सकते हैं। हाँ मतलब कर तो तुम कुछ भी सकते हो। Seems like gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. All right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. कूल, अब कहाँ जाना है? What are you doing here? The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave taking कितना चाय पिलाएगा उनको? related thingamabob or something? चाय का कल्चर ही जो है इंडिया के अंदर चाइना और अंग्रेज लेकर आए थे। चाइना से चीनी, अंग्रेजों की पत्ती, इंडिया का दूध। मॉमी इज हियर। And what's with that huge box next to you? क्या हुआ नोटी? Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontainian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. A few days ago, I got to know that even science is a question of faith. That's an interesting argument. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? करने को कोऑप में 1000 चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसमें कुछ एम हो वो कम है। हाँ मतलब कि कोऑप का एम कुछ नहीं है। हाँ बस ये है कि आप वर्ल्ड बॉसेस मार सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जैसे किसी के वर्ल्ड में जाते हो वो बॉस की HP डबल हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग कोऑप के अंदर हैं। It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us. Or Chia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyin? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those two old fossils? एक दूसरे का सामान चुरा सकते हैं। हाँ One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait here? You're really just gonna ditch us here to watch your stuff? Oh, that woman really just does whatever she wants. वाह भाई वाह, क्या बात है ब्रीज, बहुत दिनों बाद याद आया तुम्हें मुझे मेरा डेली बर्थडे विश करने का। एक ऐसा बॉस देना चाहिए जो सिर्फ कोऑप एक्सक्लूसिव हो, जिसकी HP 10-20 मिलियन हो। कोऑप में जाके विवियन ऑफ द लेक को ही मार लो, वही काफी है। Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just come back soon, okay? Aryan, welcome to the Sealy gang. Thank you for taking membership. I really appreciate it. Thank you, bro. Thank you. Enjoy your new and fresh emoticons. Paimon is final boss. अब वो देखा जाएगा। Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain.
One might as well give some to Morax and Ping too. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... Why these guys don't have lips? Eye part is understandable, but lips too now. जब उनका मुंह चलना ही नहीं है तो बंद ही कर दिया ना सीधा. आर्कन क्वेस्ट करते वक्त बॉक्स बहुत इजी हो जाते हैं, जब उन्हें मारो तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. सेटिस्फेक्शन चाहिए तो फिर वहां जाओ ना, स्पाइरल एबिस के अंदर. 10, a nice round number, don't you think? Course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. I'm a toy merchant from Fontaine. सब लोग इसको You'll चपत get लगाएंगे. nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Welcome back TTG Games. Welcome back. कैसी रही पढ़ाई? Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. वुदरिंग वेव्स कब आएगा? खेलोगे? खेलूंगा तो सही, बट जितना सुनने में आया वुदरिंग वेव्स से लोग ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है. Bro studied for 69 minutes. तुम काउंट कर रहे थे? There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without. Thank you. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less. अच्छा स्ट्रीम टाइम देख रहे हो? क्या बात है, क्या बात है. बहुत बुरी पढ़ाई हुई है. क्यों? क्या हुआ? वुदरिंग इधर रिलीज हो भी रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट लोग ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ नहीं रहे. हाँ मतलब उसका जो फाइटिंग है, उस गेम का जो एक्शन है, उससे थोड़े इम्प्रेस है, लेकिन स्टोरी वाइज ज़्यादा इम्प्रेस नज़र नहीं आ रहे. There is no harm in bringing it back to study in secret. Did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks Inorganic chemistry. भाई inorganic chemistry तो रट्टा ही मारना पड़ता है. There is no other way to कहते हैं, समझने का और कोई तरीका नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ता है भाई उसका तो. And you two? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf. But it does look like there are lots of goods from Fontaine. वैसे वुदरिंग वेव्स इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ. You are also planning to participate in the kite flying competition then? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xinyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. Ha!
You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. वैसे सच बताऊं तो जितनी मर्जी गेम्स रिलीज कर लो, वुदरिंग वेव्स आएगी, उसका ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो आएगी, और एक वो प्रोजेक्ट म्यूजन आने वाली है। कितनी खेलोगे यार? मतलब मुझसे 2 गेम्स नहीं संभल रही। कितनी गेम्स खेलेंगे ये बताओ ना। पीजर इधर कूरो गेम्स ने रिलीज नहीं किया था, सेम रीजन है कंफ्यूजन का। कंफ्यूजन It is मतलब composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a series of intersecting rods that... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? seems All interesting. right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? But from what I know, Wuthering Waves is marketed as a global release. So देखो, अगर Wuthering Waves को Genshin से compete करना है, जो कि ये compete करना चाह रहे हैं, तो इन्हें वर्ल्ड वाइड रिलीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी इनकी गेम को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये हो गया तो भाई फिर तो भूल ही जाएंगे कुछ होगा भी इनकी गेम का। One calls it the floating toting device. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything, she just... got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. All Paimon say is that Xianyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to take it apart and see how it's made. Totally. We should probably act like we didn't see anything though. You know, in consideration of her feelings and all. इंडिया मोबाइल मार्केट बात खाली इंडिया की नहीं है। गेंशिन इज अ वर्ल्ड वाइड गेम, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो सीधी सी बात है, आप उस मार्केट में तो कंपटीशन करो जहाँ पे गेम चल रही है। After all, that is the propriety with which one should comport oneself when it comes to an elder, right? ओके, अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वुदरिंग वेव्स के वेपन बैनर में 50-50 सिस्टम नहीं है, उसमें बैनर वाला वेपन कंफर्म मिलता है। अभी है, फ्यूचर में देखा जाएगा क्या हो रहा है। वेट अंटिल 2 days अगो। वुदरिंग वेव्स के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अगर रिलीज नहीं हो तो भूल ही जाओ फिर तो। Have you ever kept goldfish as pets? 8 से 12 के बीच में। ओके, 8 से 12 के बीच में कंफर्म। लेट्स गो।
never had dim sum at Shinue Kiosk before, but it should be quite the feast for sure. Ooh, and that's Paimon's stomach right on cue telling her it's time to go find Gami. Let's go! Okay, let's go. I'm out of here. मैंने just देखा पीजीआर का लॉन्चर तो डाउनलोड हो गया, गेम देखो चल रही कि नहीं चल रही। वैसे पीजीआर में भूल गया गेम कौन सी है। Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. हमारे आने से पहले ऑर्डर कर दिया, क्या बात है। मेरे फूड वूड देख के ना मुझे भूख लगाई, मुझे मेरे आलू के पराठे पड़े हुए याद आ रहे हैं। Here, hand me your cups. Oh, thank you. मुझे भूख लग रही है, मैं अपने आलू के पराठे लेकर आ रहा हूँ, खाते खाते खेलूंगा। आलू पराठा थोड़ा माइक पीछे कर दूं तो मैं चपड़ चपड़ की आवाज आएगी। Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. जो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, खाना खाने का नींबू वाला पानी मिलता है हाथ धोने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, कई बार लोग चम्मच लेके पीना शुरू कर देते हैं। That's a thing? Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. पोपट हो गया, सही बात है। Eat, eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. आई मीन चलता ही होगा तभी तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, जब अपनी वाली गेम आई थी स्टार रेल, तो स्टार रेल स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लेकिन आप उसे डाउनलोड करके वो कर सकते थे, ओपन कर सकते थे। अभी खोल के देखो तुम्हारी गेम चल रही है कि नहीं चल रही। Oh, listen, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है सर्वर लाइव ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है सर्वर हो ही ना, तुम गेम इंस्टॉल करके चलाओ और बाद में वो बोले कि मतलब यहाँ पर सर्वर नहीं है, चल नहीं सकती। चला के देखो, उसका बताना। Well,
when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. नया कुकिंग इवेंट बहुत अच्छा है, मैं करूँगा। पहले मैं स्टोरी कंप्लीट करूँगा इसकी, उसके बाद इवेंट कंप्लीट करूँगा। What? Oh, Paimon thought she was onto something there. केमिस्ट्री के 5 चैप्टर एक साथ देख के पढ़ूं तो पास हो जाऊंगा। ये तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, तुम्हें कितना याद रहता है। My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. ये गामिंग बहुत बोलता है भाई, तभी तो उसकी पीपल स्किल अच्छी है, तभी तो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, बात कर लेता है। Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. भाई चौधर में एशरॉन पुल करोगे? यार मुझे लगता है आर्शियन पुल करूंगा मैं, क्योंकि आर्शियन नाम है, एशरॉन नाम है उसका। वुदरिंग वेव्स कैसा लगा? भाई अब तक तो देखा ही नहीं खेल के। जो लोग खेल रहे हैं उनको कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। देयर सेइंग इट्स गुड, बट बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। नॉट गोना लाई, फील्स लाइक फॉन्टेन जस्ट अराइव्ड और अब कुछ ही महीनों में नेटलाइन आ जाएगा। ये तो है। And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. एशरॉन का अल्ट इज सो सिक। भाई तभी तो तुम लोग पुल करोगे। अगर एनिमेशन अच्छा नहीं तो पुल क्यों करोगे? वुदरिंग वेव्स मस्त है, चलो अच्छी बात है भाई, जब आएगा तब देखेंगे हम भी। Actually, we kind of already have plans this afternoon. हाँ, उन्होंने स्टोरी पूरा रिवर्क करा है, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स भी रिवर्क किए हैं, लेकिन अभी देखते हैं। अभी तक मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ना, मैंने किसी की स्ट्रीम देखी बैठ के स्टार्टिंग से एंड तक की, तो मैं बता भी नहीं सकता। We told Xianyun that we would go to her kite making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Shenyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that.
द ओनली थिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इज कानरिया, और कानरिया की लोकेशन तो ऑलरेडी इन्होंने रिवील कर दी कहाँ होने वाला है। She came to see me a few days ago to ask about पता है ना तुम लोग कानरिया की लोकेशन कहाँ है? Wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? जो इस टाइम तेवात के मैप में जो बीच में बड़ा सा ब्लैक होल बना दिया इन्होंने, वो पूरा का पूरा कानरिया का मैप होने वाला है। Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. Yep, that hole. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. भाई गाचा के सिवा कोई और गेम भी स्ट्रीम करोगे? भाई मैं करता हूँ। If Auntie Xianyun wants to use those dies on a kite, the formula will need to be changed. मैं करता हूँ, लेकिन इस चैनल पे नहीं है। इस चैनल पे सिर्फ गाचा। अगर तुम्हें इंडी गेम्स देखनी है तो आर्कॉन प्लेज इंडी का नाम चैनल का नाम है मेरा, youtube.com/@archon plays indie। AAA गेम्स अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन उसका चैनल बना रखा है आर्कॉन AAA के नाम से, और फर्स्ट पर्सन शूटर्स का भी मैंने चैनल बना रखा है। ज़्यादा मैंने खेला कुछ नहीं वहाँ पे अब तक, आर्कॉन FPS के नाम से। ये जो तुम क्या कहते हैं यार, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो मेरा। डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने ऊपर पिन किया हुआ है, वहाँ पर तुम मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें चैनल के लिंक दे दूंगा। वैलोरेंट खेलो कभी, खेलेंगे कभी। Great, the more the merrier. Isn't that too small? लेकिन तो किसने बोला कि क्या कहते हैं मैप जो होगा सिर्फ ऐसे ही होगा? मैप मल्टीपल लेयर्स में भी हो सकता है। आधा मैप ऐसे हो फिर उसके नीचे हो दूसरा मैप। हिमीरेस जस्ट सब्सक्राइब, अरे क्या बात है, वेलकम टू द चैनल हिमी, मिस्टर हिमीरेस। हम तो कब से सब्सक्राइब करके बैठे हैं आपका चैनल यार। इफ यू आर द एक्चुअल हिमीरेस, वरना आजकल बहुत होता है। पहली बार मेरे चैनल पे कौन आया था, राज रोमियो, और मुझे लगा कि एक्चुअल में राज भाई है, तो हुआ ये मैंने बोला, और बाद में पता लगा फेक थे। फिर बाद में राज भाई बोले अरे यार मैं तो कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि कि मेरे को कोई वो करे, क्या कहते हैं उसको, मेरे को कोई वो करे, मतलब इम्पर्सनेट करे। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल हो। यस एक्चुअल ना, हाँ फिर ठीक है, समझ गए। वेलकम टू द चैनल यार, वेलकम टू द चैनल। वैसे मैं तुम्हारे डिस्कॉर्ड के अंदर यार वो करता हूँ, मतलब कि आई पोस्ट माई लिंक ऑन योर सेल्फ प्रमोशन। सेलेस्टिया हवा में है, हाँ प्रमोशन में करता हूँ। मैं स्ट्रीम देखता भी हूँ तुम्हारी, बट आई एम ऑलवेज मोस्टली साइलेंट व्यूअर, क्योंकि मैं स्ट्रीम देखते देखते कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ। मैं अपनी फोटो एडिटिंग कर रहा होता हूँ या वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ, तो कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, बगल में स्ट्रीम चल रही होती है। सेलेस्टिया हवा में है तो मैप भी हवा में होगा ये यार। देखो सेलेस्टिया है तो हवा के अंदर, यहाँ तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। सेलेस्टिया इज इन द एयर, बट यू नेवर नो कि सेलेस्टिया भी हो सकता है मल्टी लेयर मैप हो। यहाँ से तो छोटा दिखता है ना, हो सकता है जब जाके पहुंचे तो सेलेस्टिया का मैप एक्चुअल में सुमेरु जितना बड़ा हो, यू नेवर नो। डोमिनेंट पोर्ट कब आएगा भाई? मेरे ख्याल से डोमिनेंट पोर्ट आएगा वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट के साथ, और वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट आएगी बिल्कुल लास्ट में जाके। दैट्स व्हाट आई फील। ब्रो आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है लंबी स्ट्रीम करने का, और इसलिए मिला है क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ। मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ सब गए रामलला के दर्शन करने अयोध्या। मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि कल मेरा शूट है, और ये लोग परसों आएंगे। शूट नहीं होता तो मैं भी जाता फिर। तो आज हम घर पे हैं, रेजन कैप्ट सिंस 2024। बात तो सही है, इतना लेट क्यों कर लेंटन राइट वैसे? अरे मैं क्या बताऊं, बस पूछो मत। ये तो आज हो रहा है, लेंटन राइट मेरा आज हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि लेंटन राइट हो रहा है मेरा आज, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास फोटो एडिटिंग का काम इतना था। बाय द वे मैं एक फोटोग्राफर हूँ बाय प्रोफेशन, तो इस वजह से इतना सारा पेंडिंग काम था, मेरा सर दर्द हो गया था। कल रात को मैं 2 बजे सोया हूँ फिनिश करके, और अब कल और परसों मेरा शूट है दोबारा से। कल का शूट मेरा शाम को है, तो सुबह स्ट्रीम करूंगा मैं, फिर स्ट्रीम फिनिश करके अपने शूट पे निकल जाऊंगा। किस चीज़ की शूटिंग हो रही है, विच मूवी? अरे शूट मतलब कि आई एम ए वेडिंग फोटोग्राफर, तो मेरे शूट्स होते रहते हैं। आएंगे कभी कभी फिल्म में आएंगे, हो सकता है क्या कहते हैं, हमने अनुराग कश्यप को अपनी शक्ल भेजी तो है, हो सकता है गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी किसी फिल्म में डाल दें। देखते हैं
क्या बनेगा, पर जब तक वो नहीं होता तब तक हम खाली वेडिंग शूट करके काम चला लेंगे। नेटलैंड में लावा में स्विमिंग करेंगे, बिल्कुल। Hello, friends. यार जीवन में ये टैलेंट चाहिए मुझे, खड़े खड़े सोने का, लिटरली। अब कल का शूट शाम से स्टार्ट होगा, रात को ख़त्म होगा, मैं रात को लेट घर पहुंचूंगा और उसके बाद फिर सुबह सुबह दोबारा निकलना होगा, वेडिंग है। उसके बाद फिर से मेरी मार्च में 5 और 6 का शूट है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सीधा फिर अप्रैल के अंदर शूट है और कोई एडिट भी नहीं है मेरे पास। एडिट है बट उसके बाद अपन फ्री हैं, दबा के स्ट्रीम करेंगे, दबा के कंटेंट बनाएंगे, दबा के दूसरी गेम खेलेंगे। मैंने वो गेम खेलनी स्टार्ट की थी, क्या नाम था उसका यार, बॉर्डर्स गेट, वो आधी छुट्टी पड़ी है। गॉड ऑफ वॉर आधी छुट्टी पड़ी है। हॉगवर्ट्स लेगेसी आधी छुट्टी पड़ी है। आपसे मिलने का मौका कभी नहीं आएगा सर, मैं वेडिंग ही नहीं करने वाला। आई एम अफ्रेड वी मस्ट पार्ट वेज हियर। ये सब कहते हैं, ये सब कहते हैं। मैं जिनके साथ काम करता था ना, वो भी कभी कहते थे यार मैं कभी शादी नहीं करूंगा। वेरी फ्री सोल, वेरी फ्री सोल। यार शादी वादी क्या करनी है। अभी पता चला जब मैंने उनको अपनी शादी के लिए इनविटेशन भेजा कि सर मैं शादी कर रहा हूँ, कह रहे अरे चल मैं तेरे को बता दूँ मैं भी कर रहा हूँ। और वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। तो सबका मौका आता है, लेवल सबके निकलेंगे मिस्टर हवा हवाई, लेवल सबके निकलेंगे। डोंट फॉरगेट GTA। हाँ GTA 5 बीच में पड़ी है मेरी भी, सबके कैंपेन बीच में छोड़े हुए हैं। ऊपर से कम 150 किताबें जो मुझे पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद टीवी शोज इतने सारे हैं, उसके बाद एनिमे इतने सारे मैंने पेंडिंग पे रखे हुए हैं। आई एम डेड ब्रो, इस जन्म में नहीं होगा। आई शुड हैव बीन बोर्न एज अ कैट। I have some mint oil. Perhaps we should try that. पैल वर्ल्ड तो चलता रहेगा। पैल वर्ल्ड तो मुझे जीरो शुरू करना, याद मत दिलाओ उसके बारे में। पूरा सर्वर डिलीट हो गया, पता नहीं इतनी मुश्किल से मैंने इतना जोड़ के अपना सर्वर में अपना बेस बनाया था, सारा चला गया। नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई तुमने बढ़िया गेम का नेम लिया, जरूर खेलना। खेलूंगा बिल्कुल खेलूंगा। HSR भी, हाँ भाई याद मत दिलाओ। और ऊपर से भी नई गेम्स आने वाली है, वुदरिंग वेव्स आने वाली है, और वो क्या कहते हैं अपनी जेनलेस जोन 0 वगैरह वगैरह वगैरह। A guest at One Mean पता नहीं Restaurant क्या ही होगा मेरा। recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. चलो यार, ये करता हूँ क्योंकि ये करने में टाइम लगेगा। 45 मिनट्स की तो नहीं बची क्वेस्ट ये अभी। पैल वर्ल्ड में सोलो में खेलूंगा मैं। एक बार मतलब कि आई बीन बर्न्ड ट्वाइस। पहले भी सर्वर वाला इशू हुआ था, सर्वर वाला इशू नहीं हुआ था पहले, लेकिन हाँ इशू था। अब दोबारा से इशू हो गया ये वाला। भाई बंदी खड़े खड़े सो जाती है। सबके लेवल निकलेंगे, बट निकलेंगे उसका ही जिसका Apologies in advance. Wait, Shenhe? Not there! आई डायरेक्ट GT ऑनलाइन चालू करो। ना मुझे GT ऑनलाइन नहीं खेलनी। बाय द वे क्या कहते हैं, सन ईटर की 7 किताबें हैं। 150 पेजेस बोल रहे हो? एक किताब के 150 पेजेस? नहीं ज़्यादा यार, इतनी मोटी मोटी किताबें। कैरेक्टर रिव्यू व्हेन? कैरेक्टर रिव्यू विल स्टार्ट एट 40 लाइक्स ब्रो। अभी 31 हुआ है। वो गान्यू के सींग हमेशा से लाल रंग के थे, अभी लाल हुए ये? See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. अच्छा 150 बुक्स आपके एंड 7 ईटर। अच्छा सन ईटर के 7 किताबें हैं। ओके, एक बुक में 800 प्लस पेजेस। ये भगवान, अच्छा हमेशा से रेड थे यार। मेरे पास गान्यू है नहीं ना, तो मैंने कभी इसके हॉर्न्स के देखा नहीं। और वैसे भी गान्यू हो तो हॉर्न कौन देखेगा। Huh. Was it that effective? कुछ काला आने वाला है। Chilly, कैसी huh? बातें कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? ये Master always कैसी says बातें कर रहे हो? a cool head leads to a cool heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. भाई मैं सस नहीं हूँ, ये बंदा बोल रहा है कुछ काला आने वाला है। I feel a bit better now. मैंने कब यहाँ पे सस बात की है?
मैंने अपने 2 साल के स्ट्रीमिंग करियर में स्ट्रीम पे सिर्फ एक बार गाली दी, वो भी मेरे मुंह से निकल गई थी, वो भी मेरी 24 आवर्स वाली स्ट्रीम पे निकली थी। याद है ना? जो लोग थे यहाँ पे उनको पता है। भैया मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरी जवान टूट गई। Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Gaming. Gaming. My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. गाली देने को बुरी बात नहीं, जब तक आप उसे गुस्से में ना दे रही हो। गाली गुस्से में दी जाती ब्रो। गुस्से में हो तो गाली दे सकते हो, ठीक है? उसके बिना देने का मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आता। सिर्फ क्या कहते हैं, कूलनेस झाड़ने के लिए। कहते हैं ना, गाली देके कूलनेस झाड़ना इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। कूल बनो, कूल बन के कूलनेस झाड़ो तो समझ में भी आता है। My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. अगर 50-50 हार जाओ तब भी दे सकते हो। नहीं, मैं कभी नहीं देता। मैंने एक बार दी थी, वो भी मतलब कि निकल गई थी, फ्लो में निकल गई थी। मैं बात कुछ और कर रहा था, मुझे याद है मैं किसकी, आई थिंक आई रिमेंबर मैं किसकी बात कर रहा था, बट हाँ फ्लो में निकल गई थी। मेरी आदत नहीं। इनफैक्ट इन रियल लाइफ में ज़्यादा मैं कभी दोस्तों के बीच में भी नहीं देता, मुझे आदत ही नहीं है, मेरे मुंह से निकलती नहीं है। दिल्ली वाले हैं तो भैया थोड़ा सा बीसी मुंह से निकल जाता है, पर वो तो हमारा दिल्ली वालों का तकिया कलाम है। मेरी तरह भी कूल सेल्फ प्रोक्लेम्ड बन सकते हो। लड़का शर्मा गया भाई, वो निकल जाती है कभी कभी। Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नाम से बुलाते हो तो आप दोस्त नहीं हो भाई। देखो आज ऐसा है, ये जो आजकल चलने लगा है ना कि बेस्ट फ्रेंड हो तो एक दूसरे को ऐसे बोलोगे, तेरा बाप हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, टीनेज में अच्छा, टीनेज में चलता है, ठीक है। हम जब अब हम क्या कहते हैं 34-35 साल के हो गए, फरवरी आ गया है, तुम समझ रहे हो? दिस इज़ व्हाट फैब खत्म होने वाला, मार्च आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने में 35 साल का हो जाऊँगा, ठीक है भाई। इस उम्र में जाकर ना दोस्तों के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड, एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी है, दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। मैं उनको ये नहीं बोल सकता ये चलना तू, उनको नाम से बुलाया जाता है। Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. मैं भी 30 का हूँ, शायद अब साउथ दिल्ली से भैया। नहीं भाई, मैं साउथ दिल्ली में कभी नहीं रहा। मैं नॉर्थ में रहा हूँ, मैं वेस्ट दिल्ली में रहा हूँ, और इस टाइम मैं क्या कहते हैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। दिल्ली मैंने 2-3 साल पहले छोड़ दी, लेकिन हाँ वो दिल्ली वाला बोलते हैं क्योंकि भाई दिल्ली वाले हैं। I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. वैसे मैं पहली बार किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? पहले तुमने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी? It was so thoughtful of her to ऐसे arrange झूठ this नहीं बोलना workshop, होता। so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now?
चलो बढ़िया है यार, कम से कम तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा जो क्या कहते हैं बोनी हुई है लाइव स्ट्रीम की, वो मेरी स्ट्रीम से हुई है। क्या बात है पैरा बॉय, वेलकम टू द स्ट्रीम। आओ भाई, वेलकम वेलकम। कितनी देर होगी स्ट्रीम स्टार्ट हुए? 1 घंटा 42 मिनट। ठीक है, अब तो चलेगी यार। फर्स्ट टाइम, आई एम योर फर्स्ट टाइम। आई होप आई कैन गिव यू गुड एक्सपीरियंस। क्यों नॉटी, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? नॉटी से पूछो, नॉटी को कैसा बढ़िया एक्सपीरियंस दिया था मैंने। आज तक उसे दर्द हो रहा है, मतलब आज तक उसे खुशी के मारे दर्द हो रहा है। Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird. Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest adeptus. Prettiest? Oh, for sure. As you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Sure, why not? फिर से अरे मैंने कब क्या कहते हैं बातें की? मैं तो यार अब तुम जो समझना है वो तुम्हारी समझ के ऊपर है। अल्ट्रा द वेल अंडर बेसमेंट में मरा पड़ा है। हाँ यार, मैंने काफ़ी टाइम से मैं चला तो बेचारा खाना पीना कोई देता नहीं होगा, है ना। अब तक तो उसकी क्या कहते हैं हड्डियाँ निकल चुकी होंगी मेरी बेसमेंट में। मेंबरशिप जरूर लूंगा। थैंक यू सो मच। It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. ट्रैवलर का अपना हरम है। मुझे लगता है कि अगर गेंशिन इम्पैक्ट को एक एनीमे समझा जाए, विच इट इज, इट्स अ प्लेबल एनीमे, तो हर कैरेक्टर ना अपने अलग अलग जॉनर के अंदर है। ट्रैवलर इज अ क्या कहते हैं हरम प्रोटैगनिस्ट। उस जॉनर को क्या कहते हैं एनीमे को, जिसमें बंदा एक जगह मर के दूसरे किसी वर्ल्ड में रीबॉर्न होता है, इसे क्या कहते हैं ना, क्योंकि ये भी एक तरीके से वही है। The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. इसे काई, हाँ। As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. तो ये जो बेसिकली हमारा बंदा है ना, ये एक मिनट रुको, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है इसेकाई। Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. इसका डिज़ाइन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। आई रियली लाइक शानियंस डिज़ाइन। ये बंदी ह्यूमन फॉर्म में भी बर्ड लगती है, ह्यूमन फॉर्म में भी बर्ड लग रही है। डेली करके आओगे थोड़ी देर में। यार डेली से पता नहीं कब से मैंने छोड़ रखी है। वो बंदा सही कह रहा है, 2024 से मेरा रेजिन कैप पड़ा हुआ है। I don't care. अच्छा तुम कह रहे हो तुम डेली करके आओगे? ओके ओके ओके, मुझे लगा मुझे कह रहे हो। करो करो करो, बिल्कुल करो। हाँ भी मिस्टर गेमिंग, क्या कहना चाह रहे हो आप? Want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. निकालिए अपनी शियानियन। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे बारे में क्या कहते हैं, वन थिंग इफ पीपल नो अबाउट मी, मैं बहुत ही कंजूस हूँ पुल के मामले में। मैंने लास्ट टाइम जो कैरेक्टर पुल किया था वो किया था राइडन का C2 निकाला था मैंने, जिसके लिए बहुत टाइम से मैंने सेव किया था। और मैं कैरेक्टर ऐसे नहीं निकालता कि नया कैरेक्टर आया तो निकालना ही निकालना है। मैंने न्यूविलेट स्किप किया, मैंने फुरीना स्किप की, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी राइडन C2 करनी थी उसके वेपन के साथ, जो कि मैंने कर दी। मुझे राइडन C2 हो गई वेपन के साथ, मेरी योइमिया का वेपन निकल गया। अब मैं सेव कर रहा हूँ न्यूविलेट और उसके वेपन के लिए, न्यूविलेट C1 और उसके वेपन के लिए। मैं बहुत सेव करके खेलता हूँ, मैं हर कैरेक्टर को मतलब ब्लाइंडली पुल नहीं करता, ये मेरी आदत है। और मैं वैसे भी क्या कहते हैं, आई एम मोर ऑफ अ स्टोरी गाय, आई एम मोर ऑफ अ लोर गाय। मुझे स्टोरी सुनना पसंद, इसलिए मैं पूरे डायलॉग सुनता हूँ, मैं कभी डायलॉग स्किप नहीं करता। तो मुझे स्टोरी सुनना ये सारी ज़्यादा पसंद है। गेम्स में जो मेटा में क्या चल रहा है, कौन से नई टीम बन रही है, आई डोंट केयर, और मतलब इतना मैं उसके बारे में वो नहीं करता। 4.5 देन C1 वेपन, हाँ तब तक मेरा सेव हो जाएगा। आई एम फ्री फ्रॉम गाचा एडिक्शन, आई एम थॉरोली एंजॉइंग गेंशिन इम्पैक्ट एज अ स्टोरी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी से मतलब है कि क्या चल रहा है गेम के अंदर, क्या स्टोरी कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें।
it's not that. It's just आई गॉट न्यूलेट एंड फुरीना बोथ. मैं भी निकालूंगा, न्यूलेट निकालूंगा. मैंने मतलब आई वाज डेड फिक्स्ड कि मुझे अपनी राइडन C2 करनी है उसके वेपन के साथ, जो मैंने कर दी. लगे हाथ मुझे मेरी योई में का थंडरिंग पल्स भी मिल गया. 2 कैरेक्टर बिल्ड हो गए. अब मैं न्यूलेट निकालूंगा, फिर उसके बाद देखी जाएगी. और अभी क्या कहते हैं, कोई कह रहा था कि उसकी ड्रिप मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है अपनी आर्लेकिनो की. तो अगर आर्लेकिनो टर्न्स आउट टू बी अ 5-स्टार शिनियान कह रहा हूँ, शांगलिंग 5-स्टार शांगलिंग, जैसे कि येलान 5-स्टार शिंचो है, शेनहा 5-स्टार चोंग्युन है, उसी तरीके से अगर आर्लेकिनो 5-स्टार ये निकली शांगलिंग निकली तो आई कैन कंसिडर पुलिंग फॉर हर. बाकी फिर देखा जाएगा. मैंने इवेंट्स वाले इतना ध्यान नहीं दिया, बट आर्कॉन लोर पूरा अच्छे से देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं तो इवेंट्स वाले भी नहीं छोड़ता. अगर इवेंट में कहानी है तो मैं देखूंगा पूरी. आई डू नॉट लीव एनीथिंग. आपने वो इंटरव्यू देखा है बेगूसराय वाले, वो बुढ़े चाचा मैनी मीम्स? नहीं मैंने नहीं देखा यार. मैंने राइडन स्किप की. कर सकते हो राइडन इज नॉट दैट कि भाई राइडन निकालनी है. मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट बनाई थी इस चीज़ के ऊपर कि राइडन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है गेम के अंदर. इट इज़ नॉट एक्चुअली राइडन शोगन दैट इज इंपॉर्टेंट इन द गेम. राइडन के चक्कर में जो उसका आप डोमेन फार्म करते हो ना, एम्बलम, उसकी वजह से राइडन फेमस है. अगर राइडन के ऊपर कोई और आर्टिफैक्ट सेट लगता ना एम्बलम को छोड़ के, तो आई एम गारंटिंग यू राइडन कोई नहीं इतनी फेमस नहीं होती. राइडन का फेम जो है, या फेम मैं कहूँ, राइडन का जो यूज़ है, देखो आर्कॉन है फेमस तो हुई होगी, लेकिन उसका जो यूज़ है, उसका यूज़ स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो टीम है, उसकी नेशनल टीम के 4 में से 3 मेंबर्स सिर्फ इसी से बिल्ड हो जाते हैं, एक ही डोमेन से. आपको 4 डोमेन फार्म नहीं करने पड़ते. it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a Swanee! स्वानी क्या होता है? हाँ. That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Okay, next. Arkhon could be 5-star Bennett as well. Look! Am I doing it right? अगर दोनों में से कुछ भी हुआ देन शी इज़ वर्थ पुलिंग. मैं तो मानता हूँ. जैसे येलान मैंने पहले नहीं निकाली थी, येलान मैंने बहुत टाइम बाद निकाली. आई शुड हैव पुल्ड फॉर येलान अर्लियर, बट ठीक है उस टाइम अलग सिचुएशन थी. Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a Finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? मैं चला HSR खेलने. ऑल द बेस्ट. If I make it blue, मैं it'll पता be नहीं more कब like my अपने friend. HSR का बैकलॉग पूरा If I करूंगा. make it gold, it'll be मुझे more लगता है like अप्रैल से me. पहले मैं नहीं कर पाऊंगा. HSR का बैकलॉग मेरा अप्रैल से पहले तो पूरा नहीं होगा. If ऐसा ही you लगता है are मुझे. asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. वुदरिंग वेव्स में गेमिंग जैसा सेम कैरेक्टर है. हाँ देखा मैंने. When यस. giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? Oh, we actually haven't started yet, but we're going to start. चलता कर दिया, काम पे लगा दिया. Okay, gone new. अरे Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. डेली बाद में कर लेंगे. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time.
I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. मैं पहली बार नोटिस किया मैंने गान्यू के हॉर्न्स, गान्यू के हॉर्न्स और टाइनारी के कान दोनों लोग पकड़ना चाहते हैं। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ वाइफूज के लिए पुल करता हूँ। अगर तुम वाइफूज के लिए पुल करते हो तो तुम्हें वुदरिंग वेव्स बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वुदरिंग वेव्स के अंदर जो ये बड़े बड़े जो ये क्या कहते हैं प्लॉट है गेम का, जिसके लिए तुम खेलोगे गेम को, तो बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आया स्ट्रीम देख के आपका, आया करूँगा टाइम टू टाइम। अरे थैंक यू सो मच, मैं भी आता रहता हूँ, बट जस्ट नो दैट आई एम अ साइलेंट व्यूअर। मैं चैट नहीं कर पाता, बट आई ऑलवेज वॉच स्ट्रीम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे भी पकड़ने हैं हॉर्न। देखो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बट ना बहुत ज़्यादा ही फिर क्या कहते हैं गलत हो जाएगा, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता। ये तुमने हॉर्न पकड़ने वाली बात की है ना, तो आई जस्ट रिस्ट्रेन माई सेल्फ। आई एम एन एडल्ट। याद दिलाना पड़ता मुझे खुद को। आई एम नॉट 17 years old anymore। मैं कोई 9वीं क्लास में हूँ। Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. प्लीज, ये क्या डायलॉग है ये? टेक दिस डायलॉग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हंसो भाई, बड़ी गलत मौके पे आए हो तुम। वेलकम बाय द वे। भाई शी जिनपिंग ने देख लिया ना क्या चल रहा है आजकल ये गेंशिन के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी बंद करा देगी इसे। Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. यामेते कुदासाई, यामेते। क्या FBI ओपन अप भाई, वो 3000 साल की है। Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. नो क्या है ये डायलॉग ये? ये सब क्या हो रहा है भाई? Then apply the oil to your forehead next time. मतलब टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस क्वेस्ट को, उनको पता है क्या हो रहा है। Bro. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. भाई चिल चिल प्लीज चिल, चेंज द डायलॉग। क्या क्या बातें हो रही हैं ये? Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly.
Let's not disturb them. We should get started on our kite now. Let's go. मैं पढ़ रहा हूँ चैट जो तुमने लिखी है, मैं बस उसको स्क्रीन पे बोल नहीं सकता. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? What are you laughing at? The same thing I am laughing at. Oh, that's not a completely crazy They get idea. along really well. यहाँ दोनों पहाड़ पे साथ में रहती. पर गेम का प्लॉट बढ़िया है. देख रहे हो गेम का प्लॉट? देख रहे हो गेम का प्लॉट? If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. टांगे कहाँ गई इसकी? Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. Oh, Paimon totally didn't do anything wrong. And even if she did, she doesn't deserve to get shot up into the sky for it. Something like this, then. Now that we've decided, let's make it happen. मोटो पाइमोन. नहीं वो तो ठीक है, टांगे कहाँ की उसकी? और जो काइट का उन्होंने शेप रखा है, काइट किसी हालत में नहीं उड़ सकती है. It's done! Paimon has to say, Kite Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Yes, mommy. Oh, Shenyun's calling us. दिखाओ अपनी अपनी पतंगे. Let one take a look. फॉन्टेन की मशीन से उड़ जाएगी, फिर तो क्या फायदा? पतंग को अपने खुद से उड़ना होता है. Oh, Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. Yep, the coloring makes it look a lot like Master. क्लाउड रिटर्नर बना दी उल्लू. If the tail wasn't split in बैम्बू two कॉप्टर like लगे that, it लगा के might be उड़ेगा. a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. चिड़िया वाली swallow, ये है, ये swallow है. इसने गामिंग के मुखौटे की काइट बना दी, इसने क्लाउड रिटेनर की बना दी, और उसने पाइमॉन की बना Or दी. should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh, well now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. फोर्ट्रेस ऑफ मेरपीड वाली वर्ल्ड क्वेस्ट हाँ खेली है, मेरी सारी हो गई हैं. वर्ल्ड क्वेस्ट कोई नहीं बची. ये चेन्यूवेल वाली बची है बस. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. कितनी लंबी है वो? The वही swan यार, that Gaming and 45 Shenhe minutes made बस. looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. मतलब लगता है 2 घंटे लग जाएंगे What about कम your से कम. kite, traveler? मेरी काइट तो मेरे बगल में घूमती रहती है. ये रही. Very Paimon-like indeed.
That one time the travelers suspected that a piece of meat was missing from their bowl, that was the exact expression on your face. Arkhon ready something black will shine. हे भगवान, मैं 1 घंटे से खेले जा रहा हूँ, वो हो नहीं रही है. हाँ तो अभी मैं बोल रहा हूँ 2 ढाई घंटे लगेंगे उसको. भाई बहुत लंबा हो गया है. फॉन्टेन के आते आते वर्ल्ड क्वेस्ट, आर्कन क्वेस्ट बहुत लंबी होने लगी है, विच आई एम नॉट टू बॉदर्ड अबाउट, क्योंकि मैं तो स्टोरी वाला बंदा हूँ. मुझे तो इतनी स्टोरी दिखा दो कितना बढ़िया है. Is that something that happened? Is that the Jade Chamber? Oh? हैं? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? वो छोड़ो, किससे पूछो कि इतनी ऊपर पतंग उड़ा कैसे दी कि पहाड़ पे पहुंच गई. Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. ओ फॉन्टेन की उसकी वजह से. ओके. Purina was being real when she thought of Paimon as a flying object. ये स्टोरी बोरिंग है बहुत. तुम किसकी बात कर रही हो? जो मैं खेल रहा हूँ इसकी या तुम खेल रहे हो उसकी? One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the तो strings. बर्ड बन कर भाई. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. Same. There's wind up ahead. Looks like we can glide over. वाह क्या पतंग मिली है. It's right there. अकाउंट रिव्यू 40 लाइक्स हो गए. Device हो of गए. mechanical motion is quite curious indeed. अभी करता हूँ स्टार्ट. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently 6 attentive, लोग हैं यार यहाँ and पर. now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the मेरे पास कोई पायरो डीपीएस नहीं है. कौन सा सही रहेगा? पायरो डीपीएस यूई में अच्छी है, सिंपल टू प्ले, और अपना हुताओ बढ़िया है. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. Oh, she did. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite. 5 स्टार. हाँ तो योइमी और वो दोनों 5 स्टार हैं. Pray, who could be responsible Hutao. for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery.
This locale is home to such exquisite mint. Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Sheeper? What are you doing here? You? Okay, well, Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? DPS शिनियान, तुम्हें पता है मेरी शिनियान C6 है. It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched. मेरी SSD को कुछ हो गया क्या? नहीं खुली तो हुई है. मुझे लगा मेरी SSD गई. Rex Incognito, hello, welcome to the stream. How to clear World 9 in Simulated Universe, sir? World 9? ये कब आया? I made my newbie on top of Asia. Top 1% या top of Asia? दोनों में से क्या? Hello Atomic, hello, welcome to the stream. World 9 आ गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं World 9 कब आया. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. 1% में, okay. Congratulations, bro. Congratulations. It seems that one's concern was misplaced after all. Then, should we continue flying the kite? A splendid suggestion, but it would be advisable to change locations. Perhaps your mountain would suffice? It is more than spacious enough. A fine idea. A fine idea indeed. Oops. ये मैं तुम्हें मेरी शिनियान दिखाता हूँ. Would you like to see? हाँ अभी देखते हैं. C6 शिनियान. क्या करूँ इसका मैं? तो काम करते हैं, अकाउंट रिव्यू स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द अकाउंट रिव्यू. हाँ जी गाइस, किसको क्या क्या चेक कराना है प्लीज़ टेल मी 1 और 2 कैरेक्टर्स मैक्स. चेक कराने के लिए आईडी दो अपनी, चैट के अंदर टाइप करना शुरू कीजिए जिसको जो चेक कराना है. अगले 5 मिनट तक अकाउंट रिव्यू चलेगा. 240 हो रहे हैं, 255 तक अकाउंट रिव्यू चलेगा. टॉप न्यूवी ऑन एशिया. और प्लीज़ अपना ही अकाउंट चेक कराना, किसी और का नहीं. ओके 40,000 HP, 61,300. नाइस. C1 टूम ऑफ इटर्नल फ्लो R1 के साथ. HP परसेंटेज बहुत अच्छा रोल गया है. क्रिट रेट रोल बहुत अच्छे गए हैं. क्रिट डैमेज रोल बहुत बढ़िया. एनर्जी रिचार्ज सही है. और तुम्हारा ओके तुमने HP गॉबलेट भी HP दिया हुआ है. ठीक है ठीक है. वेरी नाइस वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. फुरीना एंड राइडन. बाय द वे चैनल मेंबर्स अपना अकाउंट कभी भी रिव्यू करा सकते हैं. ओके तो राइडन तुम्हारी एनगल्फिंग के साथ R1 पे C0. यार एनगल्फिंग है तो उसको C0 पे क्यों है? C2 करते इसको. एनगल्फिंग निकालना नहीं था, सीधा C2 करनी थी राइडन पहले. इसको भाई क्या कहते हैं, लेवल 8-9 कहीं तो लेके जाओ. 5 बहुत कम है इसका. 65, 151, 268 बाकी सब सही है. इलेक्ट्रो डैमेज बोनस है तुम्हारा. एनर्जी रिचार्ज बहुत बढ़िया. क्रिट डैमेज रोल्स अच्छे गए हुए हैं. 29.5 गुड गुड सर्कलेट बहुत बढ़िया. बाकी सब बढ़िया.
फुरीना 29,000 HP के साथ वुल्फैंग से काम चल जाता है। 78,193 एनर्जी रिचार्ज हाइड्रो डैमेज बोनस के साथ। ओके, तुम्हारे क्रिट डैमेज रोल भी अच्छे गए हुए हैं, क्रिट रेट रोल भी ठीक है, बढ़िया। ऐसे रोल मुझे क्यों नहीं मिलते भाई? बहुत टाइम के बाद लगे रहना पड़ता है इसके अंदर। बहुत सारे लोग फ्रीना को देते हैं, फ्लू सांद्र फेरीमैन, वो देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ब्रो 300% CD कैसे? एंड विद मैरिज हाउस दैट CR वुड बी अराउंड 90%। नहीं 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 भाई, मैरिज हाउस के साथ 300% CD तो न्यूलेट बहुत कॉमन है यार। मैंने बल्कि मैं अगर 10 न्यूलेट देखे मेरे लाइफ में, तो 10 में से सिर्फ 2 ही थे जिनका क्रिट डैमेज 290 या उसके नीचे था, बाकी सबके 300 या 300 के ऊपर ही है क्रिट डैमेज, न्यूलेट्स के तो खासकर। गेंशिन ने हक दिया क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं, चल रही है गेंशिन भी यार, मैं काउंटर भी कर रहा हूँ, मेरा सब चल रहा है। गेंशिन कनेक्शन एरर दिखा रहा है भाई, चल रही है गेम मेरी, ये रही देखो, इट्स रनिंग। शायद वो बोल रहा बस कर पढ़ाई कर ले। अरे तुम पढ़ाई तो करते रहते हो यार, कितना ही गेंशिन खेल रहे हो। 4 महीने से एम्बलम फार्म कर रहा हूँ, 39 के ऊपर क्रेडिट रेट जा ही नहीं रहा। करते रहो, अभी हो सकता है तुम्हें 4 महीने के बाद सिर्फ एक ही दिन ऐसा जाए जिसमें तुम्हारा एम्बलम बढ़िया निकल आए। स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी याद रखना, जो तुम्हारे एम्बलम के घटिया वाले आर्टिफैक्ट्स निकल रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डाल के भी एम्बलम निकाल सकते हो वहाँ से। हाइपर का नाविया एंड फुरीना, तुम्हारी चैट क्यों नहीं जा रही UID की? अब आ गई भाई, नाविया एंड फरीना। ओके नाविया तुम्हारी, ओके इसके साथ है 61,170 एनर्जी जियो डैमेज बोनस, गुड वन यार, अच्छी नाविया है, नाइस जियो डैमेज बोनस के साथ। एंड फुरीना 37,000 फ्लूव सांद्र फेरीमैन के साथ, 47,168 एनर्जी रिचार्ज 180, नाइस नाइस, बढ़िया है ब्रो, बढ़िया, गुड वन। 4 पीस गोल्डन ट्रूप दिया हुआ उसको, 4 पीस मेरिश हाउस सेंटर दिया है। ओके कूल कूल कूल, बढ़िया, नाइस। ऊप कहाँ पे की? एक स्क्रीनशॉट भेजो DC पर, भेज दो। After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. क्या हुआ नॉटी? If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Wanderer and Furina. तुम्हारा भाई काला नीला अब तक कुछ नहीं आया। वॉन्डरर विडसिथ R1 के साथ C0 पे है, क्राउन एक भी नहीं है, 77,208 एनिमल डैमेज बोनस, 2 पीस ग्लैड, 2 पीस मेरे शाउ सेंटर, सही है, गुड वन, अच्छा क्रिट रेट है। फुरीना 38,000 स्काईवर्ड ब्लेड के साथ, ओके सिंगल क्राउन, 57,172 188 गोल्डन ट्रूप, नाइस, बढ़िया ब्रो, नाइस नाइस नाइस। Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are.
शोकेस वाले सेक्शन में डाला है, देखता हूँ। यू मिस माई सर्कलेट, वॉन्डर का सर्कलेट मिस कर दिया। अच्छा 31.1, 31 तुम्हारा क्रिट रेट, 31 क्रिट डैमेज। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। डिस्कॉर्ड खुल रहा है, मैं देख रहा हूँ तुमने क्या भेजा है शोकेस में। मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ है। रॉ स्टैट्स, मैरिश हाउस, मेरिश हाउस प्लस डोमेन, ये किसके स्टैट्स हैं? ये स्टैट्स किसके हैं? Tolerance and understanding? What brought about this conversation? अच्छा नाविया के, Did ओह one miss something? ओके। We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Hey, Paimon's hungry too. It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you know. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. ओके किधर गए? This is... ओह, सुंदर सुंदर कपड़ा पहना कर ले आई। गानियों ने तो फुरीना की ड्रेस चुरा ली भाई। I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? नर्फ होगी भाई ये तो। मनीष मल्होत्रा कुड नेवर, सही बात है। इसे नर्फ क्यों कर दिया लेकिन? अच्छा काला और नीला मैंने कहा था। ओ तो तुम्हारा ये काले नीले की बात हो रही थी। She asked them just like that. You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined. Those outfits really suit you both. विंड ब्रशिंग अगेंस्ट माई लेग्स एम्बैरेसिंग। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पहले देखते हैं तुम इन दोनों की डिस्कशन क्या चल रही थी, देखी होगी। Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use.
crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. अच्छा मैं चलता, पढ़ने जाना है। ओके ब्रो, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। जाओ जाओ पढ़ाई करो। It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well, one will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. मेरा वॉन्डर, न्यूविलेट और लेथम ब्रो। अरे तुम कहाँ चले गए? तो ये कौन सी आईडी है? 2 से क्या कौन सी आईडी स्टार्ट होती है भाई? 276 से किसकी आईडी स्टार्ट होती है? Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Shinyan? नो कैरेक्टर्स फाउंड इन दिस शोकेस। भाई इसमें तो कोई शोकेस में कैरेक्टर ही नहीं है। आईडी चेक करो अपनी। One has only heard that the two are not on good terms. होयो लैब की आईडी नहीं चाहिए, गेम की आईडी चाहिए जो नीचे आती है लोअर राइट के अंदर लिखी हुई। He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Oh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? Oh. This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. Aye. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. हाइडन हाइपर कैरी के लिए सारा C2 चलेगी क्या? सारा का जो बेस्ट वो है ना, तुम्हें कम से कम या तो C4 चाहिए, लेकिन उसका बिल्कुल तुम्हें वो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम्हें कम से कम C6, कम से कम क्या फिर C6 लेके जाना पड़ेगा। However, when one asked Menogius' opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. जाओ दो आईडी दो। 6681 वाली। ओके, वॉन्डरर स्काईवुड एटलस के साथ C0 ट्रिपल क्राउन, बहुत बढ़िया। 72 157 क्रिट डैमेज कम है, एनिमल डैमेज बोनस काफ़ी है। क्रिट डैमेज चल जाएगा, मतलब इट्स नॉट कम, लेकिन हाँ जा सकता और ऊपर। यार मुझे समझ नहीं रहा इससे ज़्यादा ऊपर क्या लेके जाओगे। पता कैसे लेके जाओगे तुम इतना क्रिट डैमेज का ऊपर? अगर तुमसे इससे कोई क्रिट डैमेज वेपन दो। अभी तुमने अटैक परसेंटेज वाला वेपन दिया हुआ है, या फिर इसको सर्कुलेट क्रिट डैमेज वाला दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा उससे क्रिट रेट काफ़ी नीचे गिर जाएगा। और वेपन कोई क्रिट रेट वाला दो तो तुम्हारा जा सकता है, लेकिन अभी ये बहुत सही है। अल्हेथम गिल्डेड के साथ है, सब सही से मेंटेन किया हुआ है। गुड वन यार, डबल क्राउन अल्हेथम, गुड वन। सही रोल गए क्रिट डैमेज के तुम्हारे, बहुत बढ़िया। और क्या था? वॉन्डर, न्यूविलेटर। न्यूविलेटर तो तुमने यहाँ पे डाला ही नहीं हुआ, खाली वॉन्डर और अल्हेथम डाला हुआ है।
तो न्यूलेट तुम्हारा है नहीं यहाँ पे ब्रो। It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. You're welcome, Mr. AJ. Welcome, welcome. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. Part 2 complete. Part 3 है ना, 3 पार्ट है ना इसकी स्टोरी के। क्या 2 days लेटर चलता रहता है यार ये। Two days later. It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything... अभी 40 मिनट का क्वेस्ट और रह गया है। कोई नहीं, अब रह गया तो रह गया, क्या करें। करना तो है ही फिनिश, क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं होगा उसको फिनिश करने का। This morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. All right, I've got the time. Where are the goods? It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested. इसका बाप होगा। अच्छा तो मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को। बाय। ओके, बाय बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू फॉर कमिंग। Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. All right. Don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. ये पुतला किसका पता है? मनूजियस का। हाँ भाई, नॉटी। ये कहाँ गए हम? तो विलेज के अंदर आ गए। You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? सुंदर बनाया यार। We're almost there. Beautiful. I'll take a rain check on that. Looks kind of cozy in here. Nice. Nap time.
Final act, You yes. must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Yip talk. Dad? Oh. Called it. Coming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me then. Let's go. बिल्कुल बाप वाली आवाज है इसके पापों की आवाज होती है ना गंभीर Make my escape. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks? इतनी बड़ी क्वेस्ट हाँ भाई क्वेस्ट बड़ी है अभी थर्ड एक्ट चल रहा है 3 एक्ट है ना इसके I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon is trying too hard. Paimon. अब ये चल रहा है फिर इस टाइम नहीं ये नहीं ये चल रहा है वैसे 4 हैं क्या बात This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but... Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. My Genshin is working now. चलो बढ़िया पढ़ाई हो गई What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. अच्छा ये फिक्स कर रहे थे फिर क्या हुआ Foe, indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. भाई साहब क्या घटिया डायलॉग मार के गया Don't think I'm gonna let you off so easily. क्लाउड रिटेनर पीछे खड़ी है Away! Let us away! वे क्या लूनी ट्यून्स है क्या Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just तो stayed चल गई by ना my side and learned the family trade,
he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. Okay, we should be good to stop here. यहाँ पर ये है। ये भगवान, इसको भी उन्होंने नौकरी पे लगा दिया। Yongli? Oh no, what is he doing here? पतंग उड़ा रहा है भाई। Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Bandits? Acting in broad daylight? In my country. Oh. क्या एक्टिंग कर रही है भाई साहब। फाइनली खत्म हुई भाई वो वर्ल्ड क्वेस्ट। भाई अभी चल रही है। कौन सी खत्म होगी? तुम्हारी खत्म हुई क्या? अच्छा वो समझ गया। It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just had some cake stuck in her throat. कभी-कभी तो होती है यार लंबी क्वेस्ट। If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Mm-hmm. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? And have some osmanthus wine. That would be lovely. Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. One's not so easily understood by spectators such as ourselves. लगता है इसको भी मोरैक्स को भी इसने भेजा है। If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। जैसे इवेंट जैसे होता है ट्रायम्फेंट फ्रेंजी वाला जो इवेंट है, अभी मैंने टच ही नहीं किया। अभी मैं खाली क्वेस्ट कर रहा हूँ ये। I have heard many इसके बाद इवेंट स्टार्ट करूँगा। acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit... तो नोइंग अरीना को कोने में बुला के एक चिप्स पैकेट दे के करा लो यार। अगर मुझसे नहीं हुआ तो फिर उसी से कराना पड़ेगा। वैसे उससे मुझे वो भी करानी है यार अभी अपनी यार मेरा अबिस। मैंने ना आईडी पासवर्ड चेंज किया था, उसके बाद से मैं उसको आईडी पासवर्ड देना भूल गया। It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth, there are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life,
And I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wuxia dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? बहुत धीरे-धीरे बोल रहा है My भाई. concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. बहुत सही बात बोली तुमने एलियन. जिंदगी एक सफर है सुहाना. I often regret Welcome introducing to the him stream. to wuxia dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Yes, by 3 or 4,000 years. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. क्लाउड रिटेनर की बात कर रहा है. वुदरिंग वेव्स का बेटा मेरे फ्रेंड को मिला था, उसने सेल कर दिया. बहुत बढ़िया. अगन भाई हेल्प कर दो. पेल फायर क्वेस्ट याद है? पेल फायर क्वेस्ट नहीं. Then she is more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. Oh, I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name. 5,000 में क्या बात? Sure. 5,000 में गेम बेचती, जो गेम फ्री में मिलने वाली लोगों को. बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भाई. So, सेल्समैन. do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. मांगने से पहले ही नहीं पता. मुझे नहीं पता तुम कौन सी पेल फायर क्वेस्ट की बात कर रहे हो. वो गेम आने में ठीक है, टाइम है, बट ऐसी भी क्या जल्दी कि तुम 5,000 रुपये देके गेम खरीद रहे हो. या तो उसका दोस्त बड़ा अमीर है, जेब से भारी है, दिमाग से हल्का. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. आरएनआर की या आरएनआर में बहुत सारी क्वेस्ट हैं. मेरे को ऐसे कैसे याद होगी पेल फायर कौन सी है? Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. One second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. भाई तो गामिंग की स्टोरी क्वेस्ट हो गई. स्ट्रीमर्स दे देते हैं इतना. अच्छा, दो स्ट्रीमर है तो बात अलग है, लेकिन यार पता है कि ये टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो टर्म्स ऑफ सर्विस होती है ना सीबीटी की, उसके अगेंस्ट है. ठीक है, वहाँ पे आईडी वगैरह सारी लिखी होती है स्क्रीन के ऊपर. अगर कुरो गेम्स को पता चल गया ना उसने बेची है, तो उसे जो स्ट्रीमर है उस जो आईडी खरीदे पूरी आईडी को ब्लॉक मार देंगे वो. Zhongli certainly has a way with words.
Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? The 10 round tree quest. It wasn't Arnara, it was a Pari quest. भाई मुझे क्वेस्ट ना बाय नाम से याद नहीं रहती. अगर तुम क्वेस्ट का नाम बताओगे ना मुझे, कैसे तुम ये बताओगे हाँ उस क्वेस्ट में ये किया था वो किया था, तो समझ याद भी आएगा. Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? Yeah. I appreciate it, I really do, but this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. भाई आर्नारा को हेल्प करने से क्या होता है, मैंने 12 ग्रीन 40 रेड आर्नारा की हेल्प की है भाई. प्रीमो जेम्स मिलते हैं, क्वेस्ट पूरी होती है, और क्या ही होगा बताओ. मैं तो जो लोग नई गेम स्टार्ट करते हैं ना, जो आज की डेट में खेलना स्टार्ट कर गेंशिन, मैं यही सोचता हूँ कि जब वो आर्नारा पहुँचेंगे उनका हाल क्या होगा. Listen to us. It's time to put these people's skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? इस बार का लैंटर्न राइट फेस्टिवल क्वेस्ट बोरिंग था भाई. लाइक यू कैन सी इट ओनली सराउंड्स गामिंग. मैं कहता हूँ गामिंग की स्टोरी क्वेस्ट लग रही है ये. I'll do my best. बोरिंग तो मैं क्या बोलूँगा, मतलब कि फैमिली ड्रामा टाइप का वो है. कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं हो रहा है इसके अंदर. Very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. जिसे छोड़ के मैं यहाँ पतंग उड़ा रहा था. Oh, I hope I didn't keep you.
My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. नहीं भाई, ये कहीं के लिए एक्साइटिंग नहीं था, ना वेस्टर्न ऑडियंस के लिए ना ईस्टर्न ऑडियंस के लिए। बहुत ही प्लेन क्वेस्ट थी ये। We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, all right? Talk to your father. अरे सॉरी हो जाता रहेगा। Should we sit? Sure. हाँ, बस इतनी बात। Should we sit? Sure. आर्ना रिक्वेस्ट फुली कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम। I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, घंटों लग जाते हैं भाई। of it. I hardly did anything noteworthy. भाई इलेक्ट्रो ट्रैवलर चलता है मतलब? You never change, do you? समझा नहीं मैं। Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. So, you're here too? I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex. मैंने तो आर्ना रिक्वेस्ट का एक लाइन पढ़ा है, बहुत अच्छा था। क्वेस्ट अच्छी है बट टू डैम लॉन्ग। एक रात में होगा क्या आर्ना रिक्वेस्ट? यार हो तो जाएगा, मतलब तुम एक दिन बैठना पड़ेगा तुम्हें पूरा करने को, तुम उसको एक दिन में कर दोगे। आर्ना रिक्वेस्ट की अगर मैं टोटल लेंथ देखूं, जैसे कि टोटल लेंथ ऑफ आर्नारा क्वेस्ट 10 घंटे से ऊपर की आर्ना रिक्वेस्ट, 10 घंटे से ऊपर। अब तुम लगा लो। It's you. I thought you were Director Hu. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? I mean, you are using the electro traveler. नहीं, I'm using वो वाला ट्रैवलर। इलेक्ट्रो ट्रैवलर थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ मैं, हाइड्रो ट्रैवलर है। अब मैं तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मैं ट्रैवलर यूज़ करता कौन है यार। हाँ मतलब ये 11-12 घंटे की क्वेस्ट है प्रॉपर। वो भी तब जब तुम लगातार 11 घंटे तक करो, इसमें ब्रेक्स इंक्लूडेड नहीं है। He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Hu dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Hu a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again. आर्नारा क्वेस्ट में वॉइस लाइन होता तो मज़ा आता यार। पता है, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड क्वेस्ट के अंदर ना वॉइस लाइन होनी चाहिए। लोग कहते हैं साइज़ बढ़ जाएगा, बट भाई मज़ा भी तभी आता है। कौन रहेगा 12 आवर्स स्टिल? मुझे 2 वीक लगे थे, वही तो कह रहा हूँ। तुम डेली की 2 घंटे भी करोगे तभी तुम्हें कम से कम 12 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते के तुम्हें लगेंगे आराम से आर्नारा क्वेस्ट पूरी करने में। This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device.
Director Hu tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. A conqueror of demons. I have made my comparisons. पतंग उड़ा रहा है. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Hu. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. I'm the conqueror of kites. सही बात है. पतंग उड़ा रहा है. शाओ पतंग उड़ा रहा है मतलब कि इमेजिन कर रहे हो मतलब कि इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं तो. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. हाँ इसके नाम पे लैंटर्न्स है भाई. Kite lament. बेचारी काइट क्या लमेंट करेगी? Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making मुझे तो ज़माने हो गए पतंग उड़ाए हुए यार ज़माने. Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Hu of our findings. How has she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. भाई साहब वाकई में बड़ी बोरिंग क्वेस्ट है यार. Take care, Xiangli. See you later. See you next time. हो गई बात बाप बेटे की. अभी शुरू ही नहीं की. बहुत बढ़िया. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh, I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Shenyun and Shanhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. 10 bucks से लिए थे कितनी लिए थे इसने? Forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Shenyun and Shanhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shanhe's अब थोड़ा सा फनी लग रहा है. अब थोड़ा सा मतलब कि फनी सा लग रहा है. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night.
Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I was reading about ancient India history book of Upinder Singh. There I got to know that Yaksha is something related to Buddhist culture, of course, which means the concept is made in India. यार बुद्धिस्ट कल्चर में तो याक्षास बाद में आए हैं. ये पहले क्या कहते हैं, याक्षास जो होते थे दे यूज्ड टू बी इन हिंदू माइथोलॉजी. जो हिंदू माइथोलॉजी उसमें होते थे याक्षा. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे धन के देवता हैं कुबेर, सुना होगा तुमने, जो रावण के बड़े भाई थे जिनकी लंका थी सोने की. तो कुबेर यक्ष, जो यक्ष होते हैं जिनको याक्षा नहीं, हिंदी में यक्ष कहते हैं, यक्षों के राजा थे कुबेर. राजा हैं अभी भी. हाउ इट इज बिकम अ चाइनीज इंटीग्रल पार्ट. ये सब चलता रहता है. लेकिन जो यक्ष जो हैं, ठीक है, ये सारे इनकी ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ज़्यादा थे. यहाँ से बोरो हुए हैं क्योंकि बुद्धिज्म वगैरह सब निकले तो बाद में ना. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. यस, यक्ष. और जो फीमेल होती थी उनको कहते थे यक्षिणी. यक्ष और यक्षिणी. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. शक्ल देखो शैनन की. कहते सोड़े तो मैं गानी को ले आती. Dad, here, have some tea. Or no, wait, best not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming, I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But I thank you, Dad. In this entire quest, Xianyun and Shenhe and the last fourth part were good. अभी लास्ट फोर्थ पार्ट तो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे ये वाला सीन अच्छा लगा. पीछे तो नींद आ गई भाई मुझे. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. You need not change who you are. Charlotte.
You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course! Please follow me. Uh-huh. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Oh, you have no idea, my friend. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Fire hazard! Oh. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontainians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since भाई साहब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है तो मेरे को नींद आने लगी अब तो. why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. किधर जाना है? Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Phew, it's done. Let's get down to
business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Finally cutscene. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Menogius. Come here, allow me. The lantern Rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? आए What should we do? Oh, should we लाइट चली गई भाई. ओह अच्छा, गामिंग का शो होगा. नाइस, अब आ रहा है मुझे. नाइस. पानी के ऊपर. बहुत बढ़िया. मुझे पता था कटसीन अच्छा होने वाला है, ये तो मुझे पता ही था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गुड सिनेमेटोग्राफी, गुड डायरेक्शन, गुड एडिटिंग, बहुत बढ़िया म्यूजिक. मजा आ गया भाई. बहुत बढ़िया. Have I taken that many pictures already? I need to load more film. निंगवांग कहाँ है? निंगवांग उसका होना भी जरूरी है. शिंगचो, शांगलिंग कोई नजर नहीं आया प्रोमिनेंटली. ओह वॉपर फ्लावर. हवा बंद हो गई. The wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Nice. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Happy बसंत पंचमी. Nice. स्टोरी बोरिंग थी बट आई लाइक इट. ऐसा रेयरली होता है. Almost wanted to join in. You saw that, right, traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. रोना आ गया ना. It was good.
Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Sun, moon, stars. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... I love you, son. I'm very proud of you. To me, Gaming, you've always been a great kid. Same thing. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Jhappi papa ko. Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gaming. Zhongli, तुम लेट हो गए बहुत ज़्यादा. Really? बहुत ज़्यादा लेट हो गए. It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. चलो आ ही गए हो तो लाइक दबा दो. कैसी है क्वेस्ट बीच में काफ़ी स्लो हो गई, काफ़ी बोरिंग हो गई, पर मेरे ख्याल से कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, मुझे वैसे इन जनरल नींद आ रही है. दोपहर का टाइम हो जाता है ना, 3 आलू के पराठे खा लिए, नींद आ रही थी. बट इट्स इन जनरल गुड. और जो इनका कट सीन था वो एज एक्सपेक्टेड ऑलवेज की तरह उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया. बड़ा मज़ा आया देख के. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. अब पार्ट 4 स्टार्ट होगा आई गेस, जिसको पता नहीं अभी करने की तो हिम्मत हो नहीं रही मेरी लिटरली अभी करने की हिम्मत नहीं हो रही उस पार्ट को. The Sid Arthur teaches that life is suffering and called that a noble truth, and the Christ of old says that nobility comes in bearing that suffering as he did out of conscious choice. Okay. And the definition of nobility has not been the same and will never be the same. As the humanity matures, the definition of nobility, humility, and morale will change. So what
can we do as a normal mortal human being, as a citizen? What we can do is follow the rule of law to the letter and call that moral. अगर तुझमें दम है तो क्वेस्ट करके दिखा. दबा दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश. अबे यार. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run... पर इसका ब्लू कलर क्यों है? 4 days for sparkle. पता नहीं यार, निकलेगी कि निकलेगी. गेम बिल्कुल नहीं खेली, कुछ सेव नहीं हुआ मेरा. कुछ स्टेलर जेड सेव नहीं हुए, कोई पुल सेव नहीं हुए मेरे. भूता हो गई है. निकल जाएगी इजिली. लेट्स सी. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली रुआन में निकाली है और मेरे पास पुल्स नहीं है. Stellar Jet collection rate is 3 times that of Primo Gems. But still, इवेंट करने पड़ते हैं ना उसके लिए, और HSR के इवेंट्स मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं टू बी ऑनेस्ट. मतलब स्टोरी नहीं. अरे क्लोरैन और नाविया, ये कहाँ आ गए बे? Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. मेरा परसों AR60 हुआ. अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे तो भी लगेगा, मुझे लगता है मेरा AR60 नेटलाइन के बीच में कभी कहीं जाकर होगा. मैं अभी शायद 70% वे पे हूँ AR60 के. Impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is. Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. मेरे तो गेंशिन खेलने का मन नहीं कर रहा. 17-18 दिन हो गए. ऐसा होता है, मेरा भी ऐसा फेज आया था बीच में. मैं बिल्कुल गेंशिन नहीं खेली थी. पता कब कितनी टाइम नहीं खेली? 6 महीने, 6 months मैंने गेंशिन छुई भी नहीं थी. फिर जब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तब मैंने गेंशिन को दोबारा हाथ लगाया. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा. होने दो विवाद. I was करो, afraid विवाद that it करो. would cause a disturbance, so I asked the locals around here and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. मेरा पूरा फॉन्टेन न्यू लीवे बाकी है. मेरा फॉन्टेन बहुत हद तक हो गया, मतलब 90% हो गया है. लीवे का न्यू एरिया भी रह गया मेरा. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life.
Speak for अब वो yourself. फेस स्टार रील का है, हाँ वो फेस स्टार रील का चल रहा है। नहीं इसलिए नहीं, मन नहीं करता, मन करता है, बीच में मेरा गेंशिन खेलने का मन ही खत्म हो गया था। एक तो ये वो टाइम था जब मतलब गेंशिन तो मैं लगा लो, मैं स्टोरी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ नहीं था, अगर हो जाता उस टाइम इन्वॉल्व तो नहीं छोड़ता, मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो मैंने छोड़ दिया 6 महीने तक। ठीक है, स्टार रील खेलने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, स्टार रील के साथ प्रॉब्लम ये है। just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. इसे स्टार रेल याद आया, डॉक्टर रेशियो कसम से क्या कैरेक्टर है, अब फ्री में मिला है तो बढ़िया ही लगेगा सबको। शादी सीजन खत्म हो रहा है, मतलब काम काफ़ी कम हो जाता है, इतना नहीं रहता। अब मेरे पास जैसे कल परसों मेरा शूट है, उसका मेरा मार्च में 5 और 6 को शूट है, उसका मेरा अप्रैल में 17-18 को शूट है, तो महीने में एक शूट आते रहते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। नवंबर दिसंबर बहुत हेक्टिक होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत हेक्टिक, बिल्कुल टाइम नहीं लगता कुछ भी करने का। I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Qiaoying Village? तो पूरा का पूरा फॉन्टेन उठ के आ गया क्या? डोंट टेल मी न्यू विलेट भी आया Your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. हाँ उसका वीडियो आएंगे पक्का आएंगे। पैल वर्ल्ड एंड्रॉइड में कब तक आ सकता है? आई डोंट थिंक एंड्रॉइड में कभी आएगा, आई डोंट थिंक सो। वीडियो बनाऊंगा भाई उसका, तो वीडियो बनाने हैं। And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. उसके रिलेटेड गेम मतलब? I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? They were sleeping when Leeway was under attack by sea monsters. Fontaine वाले? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. उससे ऐसा कुछ भाई वो तो कह नहीं सकते, उससे ऐसा कुछ आएगा कभी एंड्रॉइड पे कि नहीं आएगा। मैंने तो कभी भी गेंशिन ट्रिविया टाइम के सही जवाब नहीं दिया। तो तुम अपनी उसमें लगे रहते हो ना, यू हैव योर ओन क्विज़ेस, पजल क्या कहते हैं उनको। Nervalet was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. अच्छा वैसा कह रहे हो कि शाउटिंग की वजह से माउंटेन चढ़ाया और जब अटैक हो रहा था तब सो रहे थे, पर अटैक यहाँ नहीं हो रहा था ना, अटैक हो रहा था बहुत दूर जाके लीवे हार्बर में, ये तो चाउइंग विलेज है। Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. It was just a spur of the moment sort of bet. यहाँ से चल के चला जाऊँ मैं, मतलब? Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end.
फॉन्टेन, हाँ तो ये एरिया तो फॉन्टेन के पास है ना, लेकिन जो तो अटैक कर रहे थे लीवे के ऊपर वो यहाँ नहीं हो रहा था, वो तो कहीं और था. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalette even mentioned it earlier. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. हाँ अटैक बड़ा हुआ था लेकिन वो बहुत दूर था. Oh, that's right. Who tell? A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later. What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. I prefer to let actions speak louder than words. ओके अब कहाँ जाना है? लो भाई गेंशिन के सियानजो लूफो में आ गए. Ooh, what's in here? Maybe a growth serum? Chaoying Village is known for its tea, but you know what else they have with? भाई अगर एक गर्ल 6 साल की है और उसका भाई आधी एज का है उस के, तो ये बताओ कि जब वो 60 इयर्स की होगी तो लड़का कितने साल का होगा? 57. Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Oh, 57 57. doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Ah, me and Hu Tao? two Archons meet. Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. यार आर्कॉन भैया क्या करते हो? क्यों गलत बोला मैंने? अगर 6 साल की है और उसका भाई उससे आधी उम्र का है तो 3 साल का हो, यानी कि 3 साल छोटा हो उससे. तो 60 होगी तब भी 3 साल ही छोटा रहेगा ना. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 नहीं नहीं सही बोला ना, तो बोलो 7 करोड़. kanji. बोलो 7 करोड़. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. All right, no time to waste. Let's go see who's right. 7 करोड़ सही बात है. अब बोलिए, अब आया मजा. Good afternoon, Hu Tao, Zhongli, and Farina. Oh, great. Now Paimon's shouting too. 7 रुपए? हाय 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 कितने चीप. ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाले रिडल्स हैं. नहीं कई बार लोग हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज जाते हैं. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. बाय अगेन. We अच्छा were able पढ़ने to जा रहे हो meet फिर से, you पढ़ाने जा both रहे हो मतलब. without prior arrangement. Must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit,
I'm a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy lantern. मैं तो बन गया था बेवकूफ इस रिडल से बहुत सारे लोग बन जाते हैं भाई Appears you have been to Fontaine then. हाँ तो तुझे नहीं पता हम फॉन्टेन हो आए हैं Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. इसका मतलब फुरीना भली एक्टिंग कर रही हो आर्कॉन बनने की लेकिन आर्कॉन्स को बाकी आर्कॉन्स के बारे में पता होता है तो इसको तो पता होना चाहिए ना कि जोंगली क्या कहते हैं मोरैक्स है लोग हाफ एज याद रखते ही कैलकुलेट करते हैं What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. वही इसको पता होना चाहिए Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. Yeah. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yep. फुरीना आर्कॉन नहीं है ना वो कैसे पहचान लेगी मतलब फिर भी फुरीना की प्रोफाइल में कोई भी डायलॉग नहीं आर्कॉन्स को लेके होना तो चाहिए Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. जूते में पैसा लेके घूम रही है बता What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. भूताओं की आवाज अननोइंग लगती है नहीं यार इतना सुननी भी नहीं पड़ती ना पाइमॉन के सबसे ज़्यादा सुननी पड़ती है अगर लड़की की एज लड़की की एज x और लड़के की एज y एज्यूम करे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इज इक्वल टू 6 देन ऑल्सो y इज इक्वल टू x बाई 2 इज इक्वल टू 3 नाउ वी हैव y इज इक्वल टू 3 अब हमको y इज इक्वल टू x बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है तो ये 2ab कहाँ से आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो अब ये 2ab कहाँ से आया ये बताइए मित्रों Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. because ab is not equal to 0 You see? Paimon was right too. Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. शियानियन न्यूविलेट किस सीन कब आएगा Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry
for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest. अबे खुद के लिए कर रही है वो, Whoa, it's not like that, Paimon. या तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, हमें मुझे नहीं पता। सही बात है अर्जुन। But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all. Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. ये क्या बात कर रहे हैं, बस भाई कहानी खींचे जा रहे हैं। अल ख्वारिज़मी नाम का एक पर्शियन बंदा था 7th सेंचुरी, घर बैठे बैठे बोर हुआ और फिर उसको इंडियन न्यूमेरिकल मिले तो उसको खुजली हुआ, नंबर्स की खुजली हुआ और उसने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाया। क्या खुजली हुई है, वाह। Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was और ये हमारे spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. और ये हमारे नॉट मॉड जी अपनी 2 इमोजी लेके आ जाते हैं हर बार, हर 15 मिनट के अंदर। Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. और मिस्टर गोजो आ गए हैं अपनी 2 इमोजी लेके खुद भी। Did you come to Liyue just to enlist the services of Longsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. क्योंकि नॉट मोड बाकी के 15 मिनट किसी लड़की की स्ट्रीम ढूंढता रहता है। It was a I can believe fitting that. indeed. I can believe that. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? मैं जाऊँ क्या अपनी पे, आ जाओ। It's someone you know. Wanna अच्छा, take a न्यू विलेट। guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. भाई इमेजिन अगर न्यू विलेट मिलता है जोंगली से, वो तो जानता है, वो तो जानता है, उसकी तो लाइंस भी हैं। I will judge or stay. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. नॉट मोड हर दूसरी स्ट्रीम में दिख जाता है। एक होते हैं पॉपुलर स्ट्रीमर, दूसरे होते हैं पॉपुलर सब्सक्राइबर। नॉट मोड पॉपुलर सब्सक्राइबर है। Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. बहुत सारे चैनल का मॉड्स भी है, तभी नाम नॉट मॉड रखा हुआ है। Speaking of your friend, what about him? He doesn't get out much, does he? No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would हूताओ से मिला तो जोंगली भी तो साथ में ही होगा ना। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ये नॉट मोड पे लागू होता है। ये भी है। Oh, this gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Genshin Impact UTs.
Is that so? Hmm? To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. क्या हम आर्कॉन्स वर्सेस सॉवरन ड्रैगन फाइट देख पाएंगे इन गेंशिन? मे बी समडे, यू नेवर नो। ये लोग ने जानबूझ के जोंगली एंड न्यूविलेट को मीटअप ना किया, फ्यूचर में कुछ बड़ा ट्विस्ट रहेगा दोनों का। हो सकता है। अगर ये फाइट हुआ तो ट्रैवलर किसको सपोर्ट करेगा? ट्रैवलर कहेगा मत लड़ो प्लीज प्लीज, डैड एंड डैड नंबर 2 प्लीज डोंट फाइट। Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. He's got more friends than he knows what to do with. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette and to Lucy. Zhongli is afraid of Neuvillette. No, not afraid, but क्या मतलब ये कॉस्मिक लेवल की लड़ाई हो जाए उससे बेटर है कि निकल ही लो कहीं ना कहीं। ट्रैवलर अपने हरम को बचाए। Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Is Zhongli's true form dragon जो लिव आर्कन क्वेस्ट के स्टार्टिंग में रहा था वो कौन सा ड्रैगन था फिर? वो ड्रैगन नहीं था, वो उसकी एक्सयूविया थी। इट्स जस्ट वन ऑफ द फॉर्म्स दैट ही कैन टेक। Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Hey, sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. कॉमन चेस्ट अंडर ब्रिज ढूंढेंगे यार आराम से, भी मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया नया Seems एरिया। like your friend still has a lot of growing to do. वो आगे पीछे क्लोरैंड। If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hutao. अरे मून कार्वर माउंटेन शेपर को ये गंदे फॉर्म ही लेने थे, प्लेबल होंगे भी या नहीं? प्लेबल नहीं होंगे, मैंने स्टार्टिंग में तो डिस्कस किया था, क्योंकि उनको बहुत गंदी फॉर्म भी नहीं देनी थी और बिल्कुल ही क्या कहते हैं शियानियन की तरह उनको वो भी नहीं देना था फैंसी, क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व रहता है उन लोगों के लिए, उन कैरेक्टर्स के जो प्लेबल होंगे, तो इसलिए उन्होंने बीच का दे दिया कुछ। Oh? Traveler, Miss Farina, those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clarand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Hi, I'm Zhongli. I gave you your vision. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a friend of mine. बीच का नहीं, सस्ती सी एनपीसी बॉडी पर वॉइस ओवर करा दिया। नहीं, सस्ती सी एनपीसी बॉडी नहीं है भाई, कुछ तो उनको डिफरेंट दिया ही है, देख के लग रहा है कि वो दोनों डिफरेंट है। Ah, straight to the point. I like it. पर इतना एलैबोरेट भी नहीं बना सकते क्योंकि वो प्लेबल नहीं होंगे। It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. लाइक दबा देना भाई किसी ने नहीं किया हो तो। Then, Miss Farina. Oh, yes? When are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. फिर भी आर्कन के मेन प्रोटैगनिस्ट थे, they don't deserve this. They were never the main protagonist. भाई वो सपोर्टिंग रोल में थे। Exactly. Just like in those ghost stories. हाँ, उनको कार्टून बना दिया, वो ज़्यादा वो क्या कहते हैं फनी चीज़ है। 8 paths converge in a wood,
Beside them, an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. न्यूवलेट के प्लेबल कैरेक्टर एंड इज लोअर कैरेक्टर रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है. यस. मैडम पिंग नेक्स्ट सेंटन राइट प्लेबल होगी. डेंड्रोपोलाम यूजर यंग फॉर्म में. आई डोंट थिंक सो. दिखाया तो था वैसे उसको. हाँ, हो सकता है. Gotta say, Farina, you are really quite the character. बट वो मैडम पिंग ही थी. शैन्यू भी तो हो सकती है. कोई शैन्यून का लग रहा है. मैडम पिंग थी वो. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Only the best. And I've learned a lot. अच्छा, पिंक थी वो. ओके. वो पिंक ग्रीन थी और तुम्हारी पिंक रेड है. और मेरी पिंक येलो है. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Clorand is the one who didn't buy anything for herself. लेकिन पुल करोगे यार. डिपेंड्स कि क्या उसके स्टैट्स होते हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है. यू नो मी, मैं ऐसी आंख बंद करके कुछ पुल नहीं करता. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. Clorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Zhongli saw Newlet while chatting with Hutao, right? हाँ, मतलब Zhongli जानबूझ के चला गया वहाँ से. Newlet से मिलना नहीं चाहता था. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, अरे बहुत खींच रहे हो भाई, बंद करो. bits and bobs, you know, a little bit of this, little bit of that. उस पॉइंट पे खत्म हो जानी चाहिए थी. ये तो मेरे ख्याल से ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वो दिखा रहे हैं, मतलब खींचा हुआ फालतू का सीन है ये तो. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? चाय पी लो फ्रेंड्स. अरे हाँ यार, चाय पीनी है. कितने बज गए? 4:30 हो गए. मुझे स्ट्रीम करते हुए 4 घंटे हो गए. आर यू कंफर्टेबल विद डिस्कसिंग लीक्स ऑन स्ट्रीम? नो, एक्चुअली आई एम नॉट. मतलब कि लीक्स में ऐसे डिस्कस नहीं करता यार. तुम्हें अगर ऐसे लीक्स डिस्कस करनी है तो डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो. मैंने पिन किया हुआ है कमेंट के अंदर डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक. लेकिन ओवरलोड टीम में परफॉर्म करने वाली यूनिट है. ओके, आने तो फिर देखते हैं. आई थिंक दे वोंट फाइट व्हेन दे विल मीट, क्योंकि दोनों समझदार हैं. बट वो भाई न्यूविलेट तो बदला लेना चाहता है ना. वो तो कहता है आई विल जज. Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? Treasure hoarding dragon. That's quite the imagination you've got there, Paimon.
अच्छा, यू वांट टू टेल मी अबाउट आर्ले? चलो कोई नहीं, जब आएगी। मैं इतना इंटरेस्टेड होता भी नहीं लीक्स के अंदर। स्टोरी रिलेटेड कोई लीक हो तो बात अलग है, लेकिन कैरेक्टर, उसकी किट क्या हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं करती। वेंटी ससी बंदा है, दारू पीने के चक्कर में बहुत कुछ करता है भाई। वो वेंटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्कॉन, तुम देखना। Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. इमेजिन करो, न्यूलेट बैग पकड़ के जा रहा I है। felt a bit bad at first, but I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. If even How his strong is trusty Venti? subordinate Very. agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज द वन की हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अरे मेरे तो भाई, मैं तो क्या कहते हैं, अपने हाथ से मूंगफली नहीं तोड़ पाता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. तुम सोचो, हेक्सन सर्कल की सारी विचेस हैं, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें एलिस है, राइन डॉटर है, बॉर्बिलॉथ है, निकोल है, इतनी स्ट्रांग विचेस हैं। इन सब ने मिलकर वेंटी को चैलेंज क्यों किया? किसी और आर्कॉन को चैलेंज क्यों नहीं किया इन्होंने? दे चैलेंज्ड वेंटी। Right, Zhongli? Indeed. Corinne said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. अब न्यूलेट से मिलने जाऊं मैं? क्या चल रहा है भाई ये? We don't know exactly when he'll show up. ये कौन सा लैंटर्न राइट है? Oh, that reminds me. If there's anything you want to talk, Does the director have it? it just seemed like you were a bit preoccupied today. If you ask me, I'd say. Is that given its distance from the city, surrounded by such peace and I apologize for making. What do you think, traveler? Is this atmosphere putting you in a? Wow, you are getting really good at these. Indeed. ये विचेस की लोर बताओ, और वेंटी को क्या चैलेंज किया था? विचेस की लोर क्या मतलब कि पावरफुल विचेस हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। इनमें से कुछ तो हैं जो वैसी हैं, जो जैसे कि एलिस है, एलिस इज नॉट फ्रॉम तेवात, एलिस बाहर से है, और ये भी बहुत, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि एलिस जो है एक्चुअल अर्थ से है, एक्चुअल अर्थ, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्होंने वेंटी को वो क्या कहता है, लड़ने के लिए चैलेंज किया था। वेंटी ने उनको क्या समझाया कि अरे लड़ना अच्छी बात नहीं है, दोस्त बन के रहते हैं, हम लड़ेंगे आपस में। अब यार यहाँ आने के लिए भाई का कितना दूर से आना पड़ेगा, ये क्या बकवास है। एलिस ऑफ वंडरलैंड वाली नहीं, वो वाली एलिस नहीं है। और अपना नोसिस को रोजलिन को ऐसे ही दे दिया उसने, वही तो। गॉड, और चढ़ने की भी जगह नहीं ठीक से यार, अंदर कैसे जाए बताओ। वॉन्डरर वही लेना पड़ेगा। Swan Fury. अबे मुझे लगा वहाँ पे खड़े होने के लिए कुछ होगा। बताओ, लैंटर्न राइट में न्यूलेट्स मिल रहे हैं। हाँ भाई, न्यूलेट चचा। स्कारामूश कहाँ निकाले फिर? और निकाल लिया। Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neuvillette?
Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. फ्यूचर में आप कौन कौन से कैरेक्टर का इंटरेक्शन देखना चाहते हो? मैं तो न्यू विलेट का इंटरेक्शन देखना चाहता हूँ बाकी सारे आर्कॉन्स के साथ सबसे पहले तो स्किप कर दो बकवास करेगा भाई क्या स्किप करूँ I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great I was just passing through. It was merely... All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff. A verbal receipt of confirmation? Is such a form... Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? About. Much of that is my own excess. Oh? What? It was buy 10 boxes, get half off. वाह जज को चूना लगा दिया That explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. भाई ये इवेंट इतने टी किया है ये लोगों ने पक गया हूँ मैं अरे क्योंकि वो जो विलेज है क्याओइंग विलेज जो है क्याओइंग विलेज वो इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी Well, that is an apt description. It is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. सही बात है इंसान ने ड्रैगन सॉवरन को चोमू बना दिया सही बात है टी लीव्स मिलते हैं विलेज में न्यू कुकिंग इंग्रेडिएंट है हाँ देखा मैंने वो ये सारे जानबूझ के इतनी लंबी क्वेस्ट बनाते हैं मन करता है कि गेम डिलीट कर दूं बट पैसा टाइम और करेक्टर पे इन्वेस्ट किया है यस संक कॉस्ट फैलेसी पढ़ना है इसके बारे में कभी सुजीन संक कॉस्ट फैलेसी इसलिए चाय पी लो फ्रेंड्स यार चाय पीनी है मुझे यार During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts. So I decided to have a go. We joked with Clorant some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered... It is a very... I suppose I shouldn't be surprised. हमारे घर यहीं से आती है टी Your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display. कौन सी And I know fallacy? just the place. Sunk cost fallacy. In the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. इवेंट का बंद कर रहे हो स्ट्रीम हाँ यार इवेंट का बंद कर रहा हूँ मैं ना क्या कहते हैं अरीना को दे दूंगा अपनी आईडी ना मेरे वो करने के लिए जो वैसे वाले इवेंट है मतलब I don't have anything like a showroom. जो वो है यार गेम है जो But we do have a storage room. That sounds good to me. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also... The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long distance... If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize... Then we are of the same mind. If you say so, but you know you don't मुझे दे दो अभी फ्री हूँ क्या मतलब मुझे चाइल्ड और वॉन्डरर खेलना है You can just take one. भाई मुझे याद है सुजीन तुमने अपने एक दोस्त का डिलीट मार दिया था एक आर्टिफैक्ट या एक पता नहीं वेपन क्या कुछ तो डिलीट मारा था मुझे याद है तुमसे बच के रहना है हाँ प्रीमो वाले क्वेस्ट बेसिकली है You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity. However, after reading a few articles about Alleyways' holiday traditions, seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to do refreshing. My spontaneous outing seemed to take, for example, my foray into ceramics.
At first, soil from the ground is granular and क्या बातें कर unforgiving, रहे हैं but भाई ये? at the right amount भाई of साहब अब water, तक नहीं it becomes soft, हिया moldable, क्वेश्चन, and able to take shape. अब तक नहीं हिया क्वेश्चन, हुआ क्वेश्चन। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मुझे दे दो, मैं अरीना को दे दूंगा। नहीं, मैं दे दूंगा अरीना को। अरे उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए और 1 महीना ग्राइंड करवा लिया, इसलिए होमा उड़ा दिया। पर वही तो। In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. न्यूलिड इज प्रेटर नेचुरल, जो भी है भाई, बहुत लंबी बातें कर रहा है और फालतू की बातें कर रहा है। अच्छा मेरा क्वेस्ट, हाँ भाई क्वेस्ट लंबा है, 4 घंटे हो गए। भाई ये क्या है? सिरेमिक से बनाया है इसने? ये तो पैल वर्ल्ड का पैल लग रहा है, कोई पोकेमॉन लग रहा है ये। That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some. That was मुझे भी। indeed one of my inspirations. Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, around such an important holiday such as this, but I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. ये तो होए ओवर सवाल लग रहे हैं कि all I have to give you are 3 pulls। चम्मच दिया। तुम समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ये होए ओवर्स वाले इनडायरेक्टली तुम्हें बता रहे हैं कि हम तुम्हें 3 पुल्स देंगे, जैसे न्यूबलेट ने ट्रैवलर को चम्मच पकड़ा दिया एज अ गिफ्ट। आई हैव नो इंक्लिंग ऑफ व्हाट इज टू कम। मतलब जॉन्गली लॉकनेस मॉन्स्टर जैसा दिखेगा इन फ्यूचर? पता नहीं भाई। That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence. This could be his true form. इतनी प्यारी। That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. सब ठीक है। Why is न्यूबलेट in London, right? भाई पूछो मत। ये जो लास्ट वाला जो चल रहा है ना, ये पुरीना, नाविया, क्लोरैन, न्यूबलेट, लैंटर्न राइट के अंदर आए हुए हैं। बताओ, अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं इसका। बताओ ये क्या था भाई? ये जो उसने दिया कोई फोर्सर वेपन है क्या? ये चमचा पकड़ा है जो उसने? डोंट टेल मी। अरे मेरे पास एक पुल पड़ा हुआ है वे। है कहाँ जो उसने मुझे दिया अभी सामान? चमचा क्वेस्ट आइटम है, लेकिन कहाँ है क्वेस्ट आइटम? ये तो क्वेस्ट आइटम में हूं मैं, ये ना क्वेस्ट। मुझे तो नजर आन रहा। अच्छा फर्निशिंग है। There are no coincidences, only unseen chains of consequences. That's correct. अब किधर जाना है भाई? अरे तो वर्ल्ड क्वेस्ट है। चलो जी फाइनली खत्म। लेट मी चेक। ये भी हो गई, 4 हो गए। ये चौथा तो क्यों था मुझे समझ में नहीं आया। इसका क्या पॉइंट था? आई हैव नो आइडिया। ये वाले जो ना ट्रायम्फेंट फ्रेंजी, ये वाले पूरे करने हैं यार। कंफर्म। ओके स्टार्ट। कोई नेटलैंड और स्नेजनाया से क्यों नहीं आता? जैसे पिछली बार कोई फॉन्टेन से नहीं आया और अब आ रहे हैं। स्नेजनाया के तो बहुत सारे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? Emerge, right here. Emerge. Into the wind.
Be sanctified. Silence. Fallen leaves. Adorn my... Right here. Emerge. Right now. One with nature. Settle down. The tides beckon. उफ, वाकया कैरेक्टर दिए हैं जो मेरे को खेलने भी नहीं आते। सिलेक्ट द ट्रायल कैरेक्टर, शिंगचो दे दे भाई, डायना दे दे, कम से कम खेलना तो आता है। एडवांस करो, नॉर्मल भी हो जाएगा। मैंने एडवांस ही किया, नॉर्मल नहीं किया मैंने। Emerge. Right here. Emerge. Right here. Right now. Clouds high. The birds call into the wind. Be sanctified. Silence. राइजली येलान कंफर्म। अब हम टीम बनाते हैं राइजली येलान, शिंगचो और डायोना की। लेट्स गो। न्यूलेट आने वाला है, चचा पुल्स हैं भाई, कर रहे हैं सेव, क्या करें। कीबोर्ड ऊपर के रखा हुआ है। Let's get down to business. Know my sword. Witness the power of Guwa. Drain out my... Things are about to get dark. Have a safe trip. Let's begin. Ring cutter. Quietly now. Here comes the catch. It's gonna get a little chilly. Okay. Furina and now minute. Okay, 1 2 3 4। एक दो तीन चार, स्टार्ट। देखते जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। Let me weave you a verse. Know my soul. Game's up. Fun's over. For more, please. Have a safe trip. Ring cutter. Body in line. Time to shine. Things are about to get dicey. Stay cool. Face your guilt. न्यू इसकी अपना राइजली की जो फ्रीज टीम है ना, वो बड़ी मस्त है, नो डाउट। सुजीन कब आएगा? 4.6 के अंदर आएगा शायद न्यू विलेट। 4.5 आएगा, अभी उसके बाद आएगा आई गेस। बस प्रीमोस मिलके काफी है, मुझे लेने नहीं 30,000। यार मैं दे दूंगा किसी को करने के लिए, मेरा मन नहीं, मुझे पीनी चाय, मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, और मैं कर रहा हूँ स्ट्रीम बंद। नेक्स्ट पैच है न्यूलेट मोस्ट प्रोबेबली, फिर तो यार इकट्ठे करने पड़ेंगे पुल्स। आई एम क्लोजिंग द गेम बिकॉज आई एम टायर्ड
कितने घंटे स्ट्रीम होगी? 4 घंटे 20 मिनट चल गई स्ट्रीम मेरी। ठीक है, चलो बनता भी है, इतने दिनों से स्ट्रीम हो नहीं रही थी, तो इट स्टैंड्स टू रीज़न कि मैं इतनी लंबी स्ट्रीम करूं। क्या कहते हो दोस्तों? बट ये है, कल सुबह स्ट्रीम ना थोड़ी सी जल्दी होगी क्योंकि मुझे फिर शूट के लिए भी निकलना है, तो मैं ज़्यादा लेट करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कल थोड़ा स्ट्रीम जल्दी करेंगे। सो हो सकता है सुबह सुबह मैं अर्ली स्टार्ट कर दूँ, 9 बजे स्टार्ट कर दूँ स्ट्रीम। 9, 10, 11, 12 बजे तक स्ट्रीम किया, उसके बाद फिर मैं अपना आराम से 12 बजे तक स्ट्रीम करने के बाद आराम से फिर अपना तैयारी करूँगा। मुझे शाम को निकलना है घर से अराउंड 4 बजे के अराउंड निकलूँगा घर से मैं शूट के लिए, अपने शाम का शूट है। ठीक है जी, चलो गाइज़, बहुत दिनों के बाद स्ट्रीम की है, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग के अंदर। ठीक है जी, चलो गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू गाइज टुमारो। जाते लाइक कर देना, 48 लाइक्स हैं यार, 50 लाइक तो पूरे करवाने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ओके जी, टेक केयर, बाय।